Hello. Hello.
Hello everyone. So I suppose we need to start the session. So just confirm me once that my voice is audible and the everything is okay. My voice is audible. Just confirm in the chat box. I know participants are very less. Maybe they are waiting for the recording or they will join live. Okay. So 5 मिनट हम लोगों ने वेट कर लिया है. So I suppose we need to start the session. Okay. So balance will maybe join later or they will use the recording. So we just need to start the session. I just want to share my presentation to you so that we can start the session. Although the live participants, the number of live participants is less, but not an issue. Good afternoon to all of you. And we are going to start our session on a very important topic, that is our tax audit from GST perspective. Okay, because we all know this is the time of tax audit, this is the season of tax audit, and we all are doing the tax audit. Also, one more important information from my side. All those who are going to watch this webinar in a live mode, in a recorded mode, so it is my request to you, if you have any question, if you have any doubt, if you have any point, you are free to raise the questions, raise the points in WhatsApp group. Okay, in WhatsApp, on my personal number, we had not created any WhatsApp group because number of participant is around 45 to 50, so we had not created any WhatsApp group. Okay, so if anyone has any question at the time of going through with the recording, they may raise the questions, they may raise the points on the WhatsApp. Okay. And if possible, join it live. So it will be more convenient for you as well as for me, so that we can discuss on each and everything in a very specific way. Okay. So just try to make this session एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल. ओके, जितना हम लोग इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is related to our tax audit from the GST perspective. And also one more request from my side is that this session should be interactive. Okay, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेशंस किए हैं वो YouTube पे थे, YouTube के प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे थे. Today we are going to launch this course, this session on the platform of Zoom. So there is facility of chat box. If you have any question, then you may raise the question in the chat box. Chat box is open in front of me, so that the session will be more interactive. Okay, so the session will be more useful for me as well as for you. Okay, so with that the mode of communication will be in Hindi and English both. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड, तो आप लोग एकदम फ्री हैं उस पॉइंट पे बात करने के लिए. प्लीज कन्वर्ट इट इन इंग्लिश और इन हिंदी. ओके, तो फुल पैसा वसूल होना चाहिए आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं उससे. टैक्स ऑडिट हम लोग करने जा रहे हैं 30 सितंबर जिसकी ड्यू डेट है. एंड इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं. वी आर गोइंग टू चेक मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बट in our today's session I am going to discuss with you certain points which is related to from GST perspective. Also we are going to discuss on the form number 3CD. Okay, in a very detailed way we are going to discuss that 3CD, but my main focus is on the important points from GST perspective which we need to check while doing the income tax audit. क्योंकि हमको अच्छे से पता है, आप भी जानते हो, एज यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो लाइव इसको देख रहे हैं दे आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंट, जो लोग रिकॉर्डेड इसको देखने वाले हैं दे आर आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो जब हम लोग ऑडिट करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है. कई सारे चांसेस हैं कि हमारे अगर कोई लूप होल रह गया तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी.
कोई एक्शन हो सकता है, तो हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करें ताकि वी कैन सेव अवर सेल्फ। ऑल्सो while doing the tax audit, this is our responsibility to check each and everything. Okay, हम ये नहीं कह सकते कि the fees is only 10,000 or 20,000, how we can check all those things. I'm just talking from the perspective that if we are going for the audit of a big industry and we are going to audit for a small industry, अपने पैरामीटर सेम होने चाहिए। जो चीजें, जो बेसिक्स, जो एडवांस हमको चेक करने हैं, we need to check each and everything. Okay, कई सारे बिजनेस अभी फेक है, कई सारे फेक इनवॉइसिंग में इन्वॉल्व है, तो किस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, हाउ वी कैन चेक द रिक्वायर्ड डिटेल्स। कई बार दिक्कत ये आती है जब मैं फिजिकल सेमिनार भी लेता हूँ, तो क्वेश्चन ये होता है कि हाउ वी कैन चेक द फ्रॉड, हाउ वी कैन चेक द फ्रॉड। कोई हमारे पास में कोई फर्जी क्लाइंट आता है, फेक क्लाइंट आता है, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर क्लाइंट and how we can check the things in a proper way. So for that purpose, I am here to discuss the very important points from GST perspective while doing the tax audit. So you all are ready for the same? Just comment me once the check box. सर देखो, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जितना इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाओगे, उतना ही जो लोग रिकॉर्डेड वर्जन देखने वाले हैं उनको ये समझ आएगा कि नेक्स्ट टाइम वी नीड टू ज्वाइन द लाइव सेशन। ओके, सो दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल हु आर देयर। आपको हर क्वेश्चन पे कमेंट करने हैं, और आपके पास में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है, यू आर फ्री टू रेज द सेम इन द चैट बॉक्स। ओके, सो नाउ कौन कौन सी मेजर एंटिटीज हैं जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले हैं। इनिशियली आप लोग ये ना समझो कि वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द वेरी बेसिक्स। हम लोग क्या ये बेसिक पे डिस्कशन करते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द एंटिटीज हु इज रिक्वायर्ड टू डू द ऑडिट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आज हम लोग टैक्स ऑडिट को उसके बेसिक से उसके एडवांस लेवल तक समझेंगे, और इसके साथ में जो जीएसटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। ओके, so each and everything from tax audit, from GST perspective, and all those important areas we are going to discuss. So proprietorship form, there is requirement to do the tax audit if the turnover cross the specified limit. In case of partnership form, there is requirement of tax audit. In case of HUF, there is requirement of tax audit. In case of company, requirement of tax audit. In case of LLP, limited liability partnership, there is requirement of tax audit. In case of association of person, body of individuals, and trust, there is requirement of tax audit. These are the major entities. In that case, tax audit is mandatorily applicable. Okay, so mandatorily means applicable on the basis of the turnover of that particular entity. Sir, we all know that these are the entities on which the tax audit principles or the provisions are applicable. But we need to be very much careful while doing the company audit, while doing the LLP audit. I will also discuss the points which are very much relevant for that. Okay. अभी तक हम लोगों ने केवल यही डिस्कस किया कि कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है? दैट मींस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टर्नओवर। सो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ असेसमेंट ईयर 2023-24। दैट मींस वो करंट पीरियड जिसकी ऑडिट हम लोग करने जा रहे हैं। फॉर दैट पर्पस वी आर डिस्कसिंग इन आवर टुडेस सेशन द टैक्स ऑडिट applicability for assessment year 2023-24, that means financial year 2022-2023 के लिए क्या applicability रहने वाली है। If the gross receipt or turnover of a business exceeds 1 crore rupees, then a tax audit is requirement. That means all those entities, जो entities हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की, if the turnover or gross receipts cross the limit of 1 crore rupees, in that case tax audit is mandatory. तो सर वो 5-10 करोड़ वाली लिमिट क्या है? So if the gross receipt or turnover of a business exceeds 1 crore rupees but is less than 10 crore rupees and the percentage of cash transaction is less than 5%, then a tax audit is not required. That means if your turnover got exceeded by 1 crore rupees, in that case there is requirement of tax audit. But in your whole gross receipts, the amount
of cash receipts is less than 5%, in that case the turnover limit is 10 crore rupees. Up to 10 crore there is no requirement of audit if you are going to select the scheme. Now, if the gross receipt of turnover of business exceeds 10 crore rupees, regardless of the percentage of cash transaction, there is requirement of tax audit. That means basically, अगर मैं बात करूं, बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं, टर्नओवर बिलो 1 crore, नो टैक्स ऑडिट. अबाउ 1 crore, up to 10 crore, in that case, up to 10 crore, in that case 5% of the transaction, cash related transactions are less than 5% of total turnover or gross receipts, and above 5-10 crore, in that case audit is applicable mandatorily. That means वहां पर आपके कैश का ट्रांजेक्शन का कोई भी रेशियो हो, you need to conduct the audit, and जो टैक्स पेयर है उसको अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी. That is what is the scenario. Okay, if possible just take one pen and paper, because we are going to discuss multiple important points in this session itself. अभी तो केवल बेसिक है, जो चीजें हमको पता है केवल उसके ऊपर रिफ्रेश हो रहा है. कई सारे important point we are going to discuss in this session, in this webinar. Okay, so take one notepad and one pen and prepare the important points, so that while doing the tax audit you can use those points और आप अपने client, अपने staff को भी उसके regarding train कर सको. Now, that limit was for businessmen. अब मेरे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा एज अ प्रोफेशनल? व्हाट इज द लिमिट ऑन मी टू डूइंग द ऑडिट और फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट? So if the gross receipts of a professional exceed 50 lakh rupees, then a tax audit is required. If the gross receipt of a professional exceed 50 lakh rupees, in that case then a tax audit is required. उस केस में ये जो है tax audit यहाँ पर mandatorily required हो जाएगी. If a professional is eligible for presumptive taxation scheme under section 44 ADA, claim a profit below the prescribed limit, then a tax audit is not required. A question आया है, capital account withdrawal considered in gross receipts or not? Capital account withdrawal means आर यू टॉकिंग फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बैंक अकाउंट में ओपन होता है, और यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलिंग ऑफ एनी कैपिटल असेट्स? So just confirm me that you are talking from the point of view of capital gain account or capital cash withdrawal by partner. We are going to discuss on that. We are going to discuss our points industry wise. We are going to discuss on that regarding cash withdrawal by partner, what we need to do. Okay, so first we are going to discuss on the basics, and then after we are going to take all those points. Okay, so business के केस में we got the point, the applicability of tax audit. Now there is point of professionals, and professionals के केस में the limit is 50 lakh rupees. Okay, if the gross receipt is up to 50 lakh rupees, in that case there is no requirement of audit. If the gross receipt is above 50 lakh rupees, in that case there is requirement of tax audit. If a professional is eligible for the presumptive taxation scheme under section 44 ADA and claim the profit below the prescribed limit, that means 50% of the gross receipts, उससे कम रखता है, in that case tax audit is required. और अगर वो अपना profit 50% से ऊपर डिक्लेयर करता है, in that case there is no requirement of tax audit. That is what is the mechanism. So 2 points are there applicability of tax audit के लिए. One is from businessman point of view and second is from professional point of view. In case businessman, 1 crore and 10 crore की limit is there. In case of professional, there is a limit of 50 lakh rupees. So the limit वाला part is okay for each and everyone. Just confirm me once that the limit वाला part is okay.
नाउ अब हम लोग कुछ एनालिटिकल पार्ट्स पे बात करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है व्हाइल डूइंग द टैक्स ऑडिट। जब हम लोग टैक्स ऑडिट करते हैं तब हमको कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है when we are going to doing the MNC audit. Although I am completely dealing in indirect taxation, okay, मैं इनकम टैक्स की ऑडिट केवल कंपनीज और एलएलपी के केस में देखता हूं, बाकी मैं प्रोप्राइटरशिप की इनकम टैक्स की ऑडिट नहीं देखता हूं। आई एम कंप्लीटली डूइंग द indirect taxation practice, but I am going to check each and everything in the tax audit from GST perspective and from certain identification criteria perspective. Okay, so I will share you complete my practical knowledge, complete my things which I am going to do in case of companies, in case of proprietorship firm for GST findings. Okay, in this session itself. So you can easily identify the things. Based on the last year audit report, identify that there is any addition or deletion in the business activities or client or not. कई बार क्या होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग जब एज अ प्रोफेशनल जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट अपना डेटा भेजता है, वी आर गोइंग टू डिमांड द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिट, और उसके लिए भी हमको 5 से 10 बार कॉल करना पड़ता है। ओके, वी आर गोइंग टू डिमांड द डेटा एज फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द ऑल लेजर, वी आर गोइंग टू डिमांड द ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। ओके, वी आर गोइंग टू डिमांड द ट्रायल बैलेंस एंड सिविक रिलेटेड डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिमांड। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट से डिमांड करते हैं कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज आपकी लास्ट ईयर थी उसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या, या फिर कितने ऐसे लोग हैं दे आर गोइंग टू आस्क विद द क्लाइंट दैट देयर इज एनी एडिशन और डिलीशन इन योर बिजनेस एक्टिविटीज, और कितने ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, उस प्रोडक्ट में आपने कुछ ऐड किया है क्या। जस्ट कमेंट में इन द चैट बॉक्स दैट कितने नंबर है यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन अपने क्लाइंट से पूछते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द डेटा। यस, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको ये वाला काम करना है। वी नीड टू आस्क विद द क्लाइंट दैट व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ योर बिजनेस एंड व्हाट आर द एडिशन एंड डिलीशन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज। ऑल्सो जस्ट कंफर्म द सेम फ्रॉम द जीएसटीएन पोर्टल। कई बार हम क्लाइंट से पूछते हैं, वो बोलता है कि मैंने कोई भी एडिशन और कोई भी डिलीशन नहीं किया है। इन दैट केस वी जस्ट नीड टू लॉग इन टू द जीएसटी पोर्टल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। वी नीड टू चेक द एचएसएन एंड एसएससी डिटेल्स ऑन द जीएसटीएन पोर्टल एंड गॉट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ओके, बिकॉज जब इंस्टीट्यूट जो कोई भी एक्शन लेती है उस केस में वो लोग देखते हैं कि आपने ये टैक्स ऑडिट की, उस टैक्स ऑडिट को आपने किसी दूसरे पोर्टल से, दैट इज आपने कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया था कि यू हैव टेकन एनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन और नॉट, और तब हमारे पास में कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। सो वी जस्ट नीड टू डू वन थिंग दैट वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड वी नीड टू कंफर्म द सेम from the GSTN common portal, because now we have the facility available. We can check each and everything on the GSTN portal. We can download the HSN code wise summary from GSTN portal, sales month wise, and with that we can compare the HSN code. And इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। दिस इज नॉट इन अ टाइम टेकिंग टास्क। 5-10 मिनट के अंदर ये सारा का सारा काम हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वन एक्सेल शीट फॉर दैट एज वेल, सो दैट आपको एचएसएन एसएससी से कंफर्मेशन आ गया, उसके सेल से कंफर्मेशन आ गया, और आपने उससे खुद से भी पूछ लिया। सो internal confirmation and external confirmation both are there, so that you will be in a safer side. That is what is the way to identify the business activities, to check the same, to take the cross confirmation as well. Now check there is additional place of business or not. सो हमको ये देखना है कि यहाँ पर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर नहीं है। ओके, सो because in our 3CD report we need to report the same of the additional place of business in that 3CD report। कई बार क्या होता है, because हम लोग जब इनकम टैक्स की ऑडिट होती है, when I am going to check the data at that time, हम लोग ये देखते हैं उसके ब्रांचेस में वहां पर लिखा होता है nil branches, और when we are going to check from the external sources तो हमको ये मिलता है कि this particular business entity has although 3 or 2 branches available on GSTN records, but income tax के अंदर हम लोग उसको nil करके डाल रहे हैं। We need to improve this type of practices.
हमको उससे पूछना है कि आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, और वी नीड टू आइडेंटिफाई द सेम थ्रू द बिजनेस प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सपोज अगर वो जॉब वर्क की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है उसके पास 2 से 3 बिजनेस प्लेसेस हो। So we need to ask the same with respect to business activities as well. And also we need to take the external confirmation. We can log into the GSTN portal. We can download the GST registration certificate and we can check the same at that particular portal. और कई बार क्या होता है कि वो जीएसटी में भी अगर अपडेट नहीं करता है, इन दैट केस वी नीड टू चेक द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी एंड थ्रू दैट वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स। सो दैट इज व्हाट इज द वे फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई द एडिशनल प्लेस। सुरेश जी विल डिस्कस on each and every point one by one. Okay, so ये सेशन पूरी तरह से एनालिटिकल होने वाला है। मैं आपको कोई इनकम टैक्स के लॉ बताने वाला नहीं हूं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू एनी लॉ ऑफ द इनकम टैक्स। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द जेन्युइननेस ऑफ द क्लाइंट। ओके, एंड हाउ वी कैन सेव अवर सेल्फ व्हाइल डूइंग द टैक्स ऑडिट। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टास्क है, और आज के टाइम पे इतने ज्यादा फेक बिजनेसेस हैं, इतनी ज्यादा फेक एंटिटीज हैं। वी नीड टू केयरफुली एग्जामिन ईच एंड एवरीथिंग। हमको अपनी तीसरी आई को ओपन करके ये सारी सारी चीजें देखनी होती है। अपने हमको अपने ब्रेन को ओपन करके इन चीजों को देखना होता है। आउट ऑफ द बॉक्स जब हम लोग सोच करके काम करेंगे, इन दैट केस वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स। देन आफ्टर, for our safety, we need to take one MRL. MRL means management representation letter. Okay, all those areas we are going to discuss. वो सारे के सारे एरिया जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, we are going to check those things. We are going to take the documents. We are going to take particular things. We are going to take the challans. We are going to take the access of the various portals. For that purpose we need to take the management representation letter कि each and everything is okay. ओके, वहां पर उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर वो लोग हमको डिक्लेयर करेंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बस बाय अस आर ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, एंड हमारे नॉलेज के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें सही है। आई विल शेयर यू व्हाट एमआरएल लेटर फॉर्मेट एज वेल। ओके, so just need to comment in the chat box that you require that MRL, so I will share you the management representation letter as well. So कितने लोग यहाँ पर भी हैं जो MRL और अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं अपने क्लाइंट से while doing the tax audit? अभी लाइव में आई सपोज 6 to 7 पीपल्स आर देयर, सो आई जस्ट वांट, कितने लोग ऐसे हैं दे आर टेकिंग द MRL लेटर? यस, MRL इज रिक्वायर्ड। प्लीज रिप्लाई सर, बहुत कम लोग हैं हम लोगों को आज फ्रूटफुल डिस्कशन करना है। So these two type of letters are very much required while doing the audit. अगर आप कहीं पर काम भी कर रहे हो, if you are working as a professional, और अगर आप खुद भी प्रैक्टिस में हो, in that case this is your responsibility. While doing the tax audit you need to take the management representation letter and appointment letter. Okay, because at the time of scrutiny department is also asking the question, और अगर वहां पर कुछ ऊपर नीचे हुआ, in that case ICAI Institute of Chartered Accountancy is also asking you for the management representation letter and letter of appointment, so that आपकी जो भी clauses है वो सारी की सारी आप अपने MRL और letter of appointment में वहां पर डाल सको और आप ऑथराइज हो सको। Also one more requirement is that suppose जब भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो लास्ट ऑडिटर से हमको एनओसी लेना इज मैंडेटरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना इज मैंडेटरी। 50 to 60% प्रोफेशनल्स आर नॉट टेकिंग दैट एनओसी। ओके, जबकि ये मैंडेटरी है, दे आर गोइंग टू टेक द एनओसी ओनली इन केस ऑफ बैंक ऑडिट। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू टेक द एनओसी इन द नॉर्मल केसेस, बट ये प्रोफेशनल एथिक्स है आईसीआई का। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी असाइनमेंट, इन दैट केस यू नीड टू टेक द एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर से। दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सो वी नीड टू टेक केयरफुली। सो नाउ इन केस ऑफ न्यू क्लाइंट,
दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अपना रेगुलर क्लाइंट है, हमने उसके बिजनेस एक्टिविटीज में कोई एडिशन है डिलीशन है वो चेक कर लिया, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में कुछ एडिशन है डिलीशन है, वी हैड चेक द सेम एंड वी हैड चेक दैट द एमआरएल लेटर एंड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इज देयर. बट in case of new client we need to take certain more special care, बिकॉज जब भी कोई नया क्लाइंट आता है तो हमारे दिमाग में पहला सस्पेक्टेड थिंग ये आती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसकी वो एंटिटी फेक नहीं हो, वो जो डिटेल्स हमको प्रोवाइड करवा रहा है ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स. सो फर्स्ट first we need to identify the nature of industry, including identification of various business activities. When we are going to do the audit, when we are checking the all ledger of that particular entity or when we are checking the financial statement, तो जब हम उसकी बिजनेस एक्टिविटीज उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखते हैं, सपोज कोई बंदा जो है जॉब वर्क का काम करता है और टैक्स पेयर इज इन्वॉल्व इन द जॉब वर्क बिजनेस एंड व्हेन वी आर चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ टर्म दैट इज जॉब वर्क एक्सपेंस और जॉब वर्क रेम्यूनरेशन या जॉब वर्क रिसिप्ट्स या जॉब वर्क सेल्स, दिस इज एन इंडिकेशन. और अगर उसके पास में someone is going to do the job work, in that case we need to identify that the sufficient plant and machinery is there or not. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए उसके पास में प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए. अगर वो बोलता है आई हैव नो प्लांट एंड मशीनरी, आई एम गिविंग दैट पर्टिकुलर जॉब वर्क टू अनदर पर्सन, इन दैट केस वी नीड टू चेक दैट द जॉब वर्क एक्सपेंसेस आर देयर. सो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमको एक दूसरे से लिंक करनी पड़ेगी, जो हमको आइडेंटिफिकेशन देगा. ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग अस द hint that how we can check the things. If there is any wrong, then we can identify the same. Take the basic KYC documents of the client. This is the mandatory thing. जब भी हम लोग कोई ऑडिट स्टार्ट करते हैं, when we are going to take a new assignment, we need to take the KYC of that particular entity. If the particular entity is an individual, if the particular entity is individual, in that case we need to take the Aadhaar, we need to take the pen, we need to take the photo. मेल आईडी और मोबाइल नंबर हम लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे. इन केस ऑफ कंपनी एंड एलएलपी वी नीड टू हैव द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, we need to have the incorporation certificate, we need to have the business proof. These are the mandatory things जो कि हमको लेनी ही है while taking any new assignment, because in case of new assignment all these things are mandatory. जब भी हमारे अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है, in that case we need to be have in that situation कि हम लोग प्रॉपर रिप्लाई वहां पर कर सकें. नेक्स्ट, लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, इन दैट केस वी नीड टू टेक द लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट एंड कंपेयर द सेम विद आवर करंट ईयर ऑडिट रिपोर्ट ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क, including NOC letter from previous auditor. We had already discussed on that particular term. MRL letter is required and letter of appointment is also required. Okay, we'll share you the complete MRL letter, that is management representation letter and appointment letter का format. बस कई बार क्या होता है, एमआरएल का लेटर हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं, वी आर डाउनलोडिंग द सेम फ्रॉम द गूगल. ओके, और वो वैसा का वैसा हम लोग दे देते हैं उस क्लाइंट को और उसे साइन करवा लेते हैं. जबकि हमको ये ध्यान में रखना है एमआरएल लेटर इज नॉट अ यूनिक डॉक्यूमेंट. उसके अंदर ऐसी टर्म्स होती है, दे आर चेंजिंग फ्रॉम द नेचर एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑफ क्लाइंट टू क्लाइंट. सो वो सिमिलर नहीं हो सकता है, उसके अंदर हमको कुछ क्लॉजेस ऐड करनी पड़ेगी एज पर द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. अभी हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है इसलिए हम लोग उस पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, वी आर गोइंग टू सेंड द फॉर्मेट टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट इज गोइंग टू साइन ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड वी आर गोइंग टू टेक द सेम एंड वी आर take it on our record. This is not a right practice. We need to change, we need to modify the MRL letter according to the nature of the particular industry. Okay, so new entity, all entity, old entity is okay, and the applicability of tax audit is okay. Just confirm me in the chat box that you are getting my points. So
certain documents are required before starting the tax audit. अभी जो ट्रेंड चल रहा है, we are just demanding the all ledger, the trading and profit and loss account, the trial balance, and we are going to do the ledger scrutiny, and if possible we are doing the voucher verification as well. Okay, मैं ये कहता हूं कि वाउचर वेरिफिकेशन करना चाहिए. वाउचर वेरिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द टैक्स ऑडिट, बट देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम द एक्सटर्नल कंफर्मेशन. वी गॉट द आइडिया टू गेट द आइडिया ऑन मल्टीपल थिंग्स, सो वी नीड टू डू दैट एक्सरसाइज एज वेल. So first we need to take the business registration certificate and GST registration certificate. देखो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कई सारे आईसीआई जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस ले रही है, उनकी जो कमेटी है वो एक्शन ले रही है, और हमारे ऊपर भी एज अ टैक्स ऑडिटर हमारे ऊपर भी जो है पीयर रिव्यू एप्लीकेबल हो गया है. देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू एज वेल. सो किसी भी फ्रॉड की शुरुआत, किसी भी फेक ट्रांजेक्शन की शुरुआत उसके रजिस्ट्रेशन से होती है. So we need to check these things from the initial point, so that अगर अपने को स्टार्टिंग में ही कोई पॉइंट ऐसा मिल गया जिससे अपने को आइडेंटिफाई लगे, कुछ पता चले कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है, इन दैट केस वी नीड टू चेक द थिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे. तो हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे. अगर अपने को लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, हम लोग एनालिसिस तो करेंगे पर वो चेंज हो जाएगा, अपना जो देखने का नजरिया है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर चेंज हो जाएगा. सो when we are going to take the business registration certificate and GST registration certificate, that means two registrations are there. Business registration certificate may be Udyam, may be Udyog, whatever may be the applicable on that particular industry as per the date of the formation of the industry. So we need to take these two type of certificate, that is Udyam and Udyog registration and the GST registration certificate. In dono registration certificate se we need to identify the address of that particular client, that means principal place of business. Also the business activity is also mentioned in that particular business registration certificate, that is Udyam or Aadhar, that is this industry is a manufacturing industry, service industry, trading industry. Okay, we got the idea about address, we got the idea about additional place of business, we got the idea about the date of commencement of the business की कितनी पुरानी को इंडस्ट्री है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने कब से लिया है. इन सारे पॉइंट से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इफ द डिटेल्स which is provided in both the documents are same, in that case we got that idea that industry is doing in a right way. Then trading profit and loss account, balance sheet and trial balance we are going to take, because we need to prepare the proper financial statement and we need to prepare the tax audit report, and in that tax audit report we need to attach the trading profit and loss account and balance sheet. For that purpose, first we need to take the trading P&L balance sheet and trial balance of the accounting software of the particular client. All ledger generated in PDF and Excel. Each and every accounting software is going to generate the all ledger, and in that particular all ledger you will got all the ledgers which is created by that particular entity in the accounting software. And for proper checking you just need to take the index of the all ledger. मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपने all ledger ही ले लिया that will also be a sufficient document. इंडेक्स की कहां जरूरत है. ऑल लेजर के अंदर किसी ने वहां पर कोई पेज रिमूव किया उस पीडीएफ फाइल में, या फिर उस पेज में कुछ चेंजेस किया, इन दैट केस वी हैव सेकंड कंफर्मेशन, वी कैन चेक द सेम फ्रॉम द इंडेक्स. उस इंडेक्स के अंदर हमारे पास में सीरियल नंबर आएंगे और वो इंडेक्स भी अल्फाबेटिकल होगा, सो दैट वी गॉट द बेटर आइडिया फॉर द सेम. कोई लेजर वहां से स्किप नहीं हुआ है, ये भी अपने को आइडिया मिल जाएगा. एंड ऑल द लेजर वी हैड चेक्ड, दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन. And take the ledger in Excel as well as in PDF file, so that if we want to do any calculations in that particular ledger, so that we can do the same in the Excel sheet. And if there is any issue in format, we can check the same from the PDF ledger, so that क्योंकि scrutiny करते time PDF ledger थोड़ा सा easy रहता है, और for doing the calculations the Excel ledger is easy for us. उस लेजर में हमको कौन कौन सी चीजें देखनी होती, कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट है, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. ऑल दोस स्पेसिफिक फील्ड ऑन व्हिच वी नीड टू do our special attention from tax audit point of view, we'll discuss on that as well. We need to take the bifurcation of closing stock. Okay, we need to compare the bifurcation of closing stock from the last year audit report with the current year audit report. Bifurcation of closing stock means finished goods, WIP, raw material.
Three categories are there. So we need to identify the particular closing stock. Suppose you are going to do the audit of a construction industry. कोई है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ऑडिट करता है एंड they are going to check the WIP that the WIP figure is correct or not. और जो क्लाइंट ने लिखा है वहां पे WIP हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं. कोई है जो उस WIP को कैलकुलेट करता है on the basis of the accounting principles or accounting aspects, or we are just going to take the figure which is provided by the client in the WIP. So suppose there is a construction client, construction का client है, उसने ये शो किया कि I have a WIP of 50 lakh rupees. Suppose I am just going to prepare the format as well. I am requesting everyone please reply in the chat box so that the session will be more interactive. और हम लोग जब एक दूसरे से interaction करेंगे, then we got multiple things. So suppose the sales of that particular construction client is 5 crore rupees. Opening stock is suppose 25 lakh rupees. Purchases is around 3.5 crore rupees and direct expense is around 25 lakh rupees. Gross profit is there, and suppose he is showing that there is a WIP is around 50 lakh rupees. उसने WIP यहाँ पर 50 लाख रुपीस का आइडेंटिफाई किया. नाउ दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने वो WIP यहाँ पर सही रिपोर्ट किया है या फिर नहीं रिपोर्ट किया है. बिकॉज WIP इज दैट जिसके ऊपर उसने काम कर दिया है. इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन WIP मीन्स the particular part on which we had the particular person, the taxpayer has already done the work but the payment is still pending. यहाँ पर पेमेंट उसका पेंडिंग पड़ा है, उसने काम कर दिया है उसके ऊपर. Okay, so that will be the WIP, work in progress. So in that case, suppose for that particular period उसने अगर 40 लाख रुपीस का काम किया है, तो अपन जब ऑडिट करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑडिट इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑडिट इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, और रेट्स आर आल्सो स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो अगर WIP होगा तो वो पैसा, दैट मींस द पर्टिकुलर टैक्सपेयर हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, जस्ट अमाउंट इज पेंडिंग. सो वी जस्ट नीड टू डिमांड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई. So that we got the idea that उस जो तूने WIP शो किया है 50 लाख रुपीस, उससे रिगार्डिंग कितना अमाउंट तूने तेरे बैंक अकाउंट में रिसीव कर दिया है, so that we are going to consider that amount as WIP. कहीं वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए ही तो यहाँ पर WIP ज्यादा शो नहीं कर रहा है. That person is not going to show a fake WIP to increase the net profit or the gross profit. We need to identify the same, because अगर इससे ऐसा हुआ और हमने उसको चेक नहीं किया और उसने बैंक से कोई फंड ले लिया और वहां पर अगर कुछ डिफॉल्ट होता है, इन दैट केस दे आर गोइंग टू रेज द क्वेश्चंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. So we need to identify that the WIP, work in progress, is completely based on the completion of that particular project. We need to check the complete project list. When we are going to do the audit of an construction company, we need to take the copy of the work order as well. और उस वर्क ऑर्डर से हमको आइडेंटिफाई लगेगा कि क्या उसकी परसेंटेज की टर्म्स है, एंड हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू डिसाइड द WIP. और जो WIP उसने शो किया है उसमें से कितना अमाउंट उसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर रिसीव हो गया है, सो दैट वी गॉट द परफेक्ट आइडिया द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पेयर इज ओके और नॉट. That is what is our responsibility. वरना होता क्या है, that person is going to give us the particular trading P&L balance sheet. He has already shown the WIP figure. We are just going to take the same, that means cut and copy and paste, and we are just going to compare the net profit gross profit ratio from the last year. But भाई वो WIP कहाँ से लेके आया है, we need to identify the same. And one more point, when you are going to do the audit of the construction client, we need to check the purchases very carefully.
बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन में परचेजेस जो है फेक इनवॉइसेस थी. They just give the 2.5% to that particular supplier and they had taken the fake invoices. And the same was not reflected in the GSTR to be written. And on the basis of that, tax auditor has done the audit. Bank has done the finance. और बाद में उसके बाउंस हुए तब पता चला कि वहां पर उसका WIP की कैलकुलेशन भी परफेक्ट नहीं थी और जो परचेज के फिगर्स थे वो भी वहां पर गलत थे. तो वहां पर ऑडिटर के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर दैट. अभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी बोलता है कि वेल वी आर गोइंग टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न एट दैट टाइम also we need to take the letter, that is recommendation letter from that particular client कि हम रिकमेंडेड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट को टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ अस. So we need to take that particular declaration as well. So the construction part, the WIP part is okay for everyone. Although we'll discuss the how we can identify the purchase, how we can verify the purchase, we'll discuss on that. But the WIP part and the calculation part and the construction industry se related example, is that okay for each and everyone? We need to take the stock register. We need to take the stock register as well. कई सारे इंडस्ट्रीज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू मेंटेन द फिजिकल stock register and multiple industries are maintaining the system generated stock register. So we need to check that stock register if the same is maintained in system or if the same is maintained in physical. Suppose you are going to do the audit of the particular textile industry. If you are handling the textile, because in Rajasthan, in certain area where the textile industry is on high, in Surat is also known for the textile industry. Maharashtra में भी कई सारी textile industries हैं. Malegaon is also known for the textile industry or grey traders. So in that case, I am just going to take certain examples industry wise as well, so that the session will be on the basis of practical terms. तो हमको ये आइडिया लगेगा कि किस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको बहुत केयरफुली ध्यान में रखनी है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स वेरी केयरफुली. सो in case of textile industry, they are saying that to maintain the stock register, this is not possible for us. They are not maintaining the stock registers. Okay, because textile के अंदर मीटर पे वहां पर सारी सारी चीजें चलती हैं. They, as per their thought, they are not able to maintain the inventory. They are not maintaining the inventory. In that case, when we are going to file our tax audit, when we are going to fill the 3CD form, in that case, we need to report the same in our observation that the stock register is not maintained and not produced by the client for us. Okay. आप वहां पर वर्ड यूज कर सकते हो नॉट मेंटेन्ड और नॉट प्रोड्यूस. दिस इज ऑल डिपेंड ऑन अस, बट वी नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन दिस पर्टिकुलर फैक्ट बिकॉज एज पर द AS number 2 regarding inventory, they need to maintain the closing stock register. Then they need to maintain the details regarding the closing stock. So for that purpose, when we are going to do the tax audit, this is our responsibility to take that particular stock register. And if the client is not maintaining the same, in that case, we need to report the same in the tax audit report. Because कई बार जब इनकम टैक्स की ऑडिट आती है, जीएसटी वाले भी उस केस को स्क्रूटनी में लेते हैं. दे आर आल्सो गोइंग टू टेक द सेम इन ऑडिट. एट दैट टाइम दे आर फर्स्ट डिमांडिंग द स्टॉक रजिस्टर. और उस समय क्लाइंट अगर बोलता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लाइंट इज गोइंग टू से दैट सर स्टॉक रजिस्टर इज नॉट मेंटेन्ड बाय अस, इन दैट केस वो बोलेगा आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ है कि आपने स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन किया है. सो दैट विल बी एन negative point for us as a professional. So this is our responsibility. If the particular document is not maintained by that client, in that case we need to report. Then job work register is also mandatory, and also this is our responsibility. जब हम लोग उसके job work register को देख रहे हैं, on the basis of the nature of the industry, we got that idea that particular client is involved in the job work business. In that case, we need to demand, first we need to demand the job work register. Also we need to check that वो जॉब वर्क खुद से कर रहा है या फिर बाहर से करवा रहा है. And if the person is giving that particular job work
work to any other person, in that case we need to check that if the counterpart is registered under GST, in that case okay, and if the counterpart is not registered under GST, in that case we need to check that the particular place of that entity is registered under GST as an additional place of business or not. अब आप लोग बोलोगे सर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस एंटिटी इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज अ अनरजिस्टर्ड एंटिटी. फॉर दैट पर्पस जस्ट टेक द जॉब वर्क रजिस्टर इन एक्सेल. You got the GSTN of all the job worker. If there is no GSTN, in that case, that industry, that particular job worker is to be considered as unregistered person, and you need to check the same. बिकॉज अगर वो जॉब वर्कर का प्लेस अनरजिस्टर्ड प्लेस उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं ऐड है, इन दैट केस अगर हम दो लॉ को मर्ज करें, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी लॉ, इन दैट केस देयर इज प्रोविजन दैट उसकी पूरी सेल्स को वहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन, दैट मींस जो जॉब वर्क प्रोवाइडर है उसकी सेल्स में ऐड कर लिया जाएगा. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, because after tax audit if they are going to do these things, then this is a question for us. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मैं एक फिजिकल सेशन ले रहा था, एट दैट टाइम वहां पर ये आया कि सर द फीस ऑफ टैक्स ऑडिट इज जस्ट 15,000 and 20,000 rupees. हाउ दिस इज पॉसिबल टू चेक ऑल दोस थिंग्स इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस? So first point, this is a question of responsibility, because when we are going to take the assignment, this is our responsibility to check each and everything of that particular assignment. Okay. Second, if we are going to give certain additions to our particular client, in that case we will get a premium on our fees. Okay. अपने को केवल टैक्स ऑडिट ही नहीं करना है, we need to give certain suggestions, certain consultancy to our client कि you can improve your process by these things. If there is any penalty which will be imposed on that particular client due to certain non-compliances, in that case we need to suggest our client कि ये compliances हैं, you need to fulfill those compliances. Based on the nature of industries, what are the schemes, what are the benefits available in the market, we need to guide to our client कि these benefits are available for you. So जब हम लोग ऐसा एनालिसिस करेंगे ना, when we got that idea कि यहाँ पर ये चीजें हैं जो हम हमारे क्लाइंट को कंसल्ट कर सकते हैं. And also in case of job work, ITC 04 is also mandatory. So you need to check that the ITC 04 is filed by that entity or not. This is the first point. Because when you are going to audit for the textile industry, 90% of the textile industries are not going to file the ITC 04 because they are not maintaining the inventory records. तो उस केस में क्या होता है, वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दैट स्टॉक रजिस्टर इज नॉट मेंटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर पार्टी, बट वी आर नॉट गोइंग टू रिपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम द ITC 04 पर्सपेक्टिव. जबकि when we are going to do the tax audit, this is our responsibility that all the mandatory returns, all the applicable returns which is applicable on that particular taxpayer has filed by that taxpayer or not, we need to confirm the same. So for that purpose, if the entity is involved in that job work business, and if entity is doing the job work or giving the work on job work, in that case we need to check the ITC 04 as filed or not. And if that taxpayer has not filed that ITC 04 return, in that case we need to report the same in our tax audit report. We need to report in the observation column. We are going to discuss on that as well, but I am just going to discuss the points कि ये points है जो आपको ध्यान में रखने हैं. We need to be very carefully examine all those points, because एक छोटी सी भी गलती हमारे लिए नुकसान करवा सकती है. Next, list of related party transactions you need to take, and from that related party transaction you need to confirm the same from the all ledger. So first you need to take the same from the client. Okay. And when you are going to take the related party transactions, in that case, suppose if there is any purchase or sales with the related party transaction, in that case we need to check that the price is okay or not. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने related party को कोई goods एकदम lower price पे दे रहा है. In that case we need to identify the same, because वहां पर एंटी प्रॉफिटिंग के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल इन दैट केस. सो वी नीड टू चेक दैट द प्राइस इज ओके इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. सॉफ्ट कॉपी ऑफ टीडीएस रिटर्न वी नीड टू टेक. हो सकता है जिस क्लाइंट की हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके टीडीएस के रिटर्न, वी आर नॉट गोइंग टू फाइल द टीडीएस रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी. So for that purpose we need to take the TDS file, TDS return soft copy.
and if possible take it in Excel so that you can analyze the section wise analysis of TDS applicability on the basis of all ledger, जिससे कि आप निकालोगे कि इन transactions पे TDS is applicable and this is the amount of the TDS, so that you can compare the same with the TDS return and with the transactions which is involved in that particular entity, and the taxpayer has already paid the TDS accordingly. We need to check the same. This is also our responsibility. For that purpose, you need to take the documents in Excel only. अगर आपको लगता है कि वो client is involved in job work, in that case you need to take that particular job work register for 194C section. If there is any interest payment, in that case, you need to check the interest payment register, convert the same in Excel, and with that Excel, compare the TDS return filed on the TDS traces portal and compare the same that the 194A के अंदर TDS का payment जो है वो एकदम proper हुआ है या फिर नहीं हुआ है. This is an important task. जबकि होता क्या है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, वी आर गोइंग टू चेक द लेजर इन पीडीएफ फॉर्म, और जब हम उसको चेक करते हैं एट दैट टाइम हम लोग वो ट्रांजैक्शन देखते हैं कि ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर टीडीएस है, ये 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर टीडीएस है. उस केस में देयर इज चांसेस कि कोई चीज यहाँ पर स्किप हो जाए. But if we are going to take the Excel sheet, we are put the filters in that Excel sheet, and then after we are going to compare the same with TDS return. In that case, this is also reduce our time and efforts, and this will give us the exact confirmation. Now, we need to take the all the challans which is paid by that particular taxpayer. सर मैं ये जो आपसे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वाली डिस्कशन कर रहा हूँ ना, जब भी कोई केस आईसीआई के पास में जाता है, नफरा के पास में जाता है, एट दैट टाइम दे आर फर्स्ट डिमांडिंग these documents, that all those documents are maintained by you or not as a auditor. So we need to take the challan, all the challan, whether it is related to GST portal, whether it is related to traces, that is TDS portal, and whether it is related to your advanced tax or MCA portal related challans, we need to take the same, or we need to confirm the same from the relevant website. So these are the necessary documents we need to take before starting that particular audit. In documents ke bina we cannot start the audit. With that, we need to demand for the management representation letter, that is MRL, and appointment letter. So these are the mandatory documents which is required for the tax audit. So just confirm me once the document part is okay for you, and the special things which we need to be very much careful regarding our regular client and regarding our new client is okay for you, so that we can take the next segment. And I am expecting reply from each and everyone. This session is not just for 1 or 2 persons, this session is for all. Okay, और रिप्लाई देने की अपॉर्चुनिटी केवल हमारे पास में, बिकॉज दोज हु आर गोइंग टू लिसन द रिकॉर्डिंग, तो उनके पास में रिकॉर्डिंग की ये रिप्लाई देने की फैसिलिटी तो कम से कम नहीं होगी. कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई पॉइंट पे आपको इश्यू हो रहा हो, यू कैन रेज द क्वेश्चन, chat box is there. Okay, so we will discuss the question as well in between the session. Now, कौन कौन से लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जो हमको लेने हैं अपने क्लाइंट से फॉर द टैक्स ऑडिट. आई नो दिस इज a very basic thing, आप सबको पता है. we need to take the income tax portal login ID और password to upload the tax audit report, and also we need to take the GST portal login ID and password. कई बार हम लोग क्या होता है केवल उससे उसका जो कॉपी है क्योंकि वो डिमांड कर लेते हैं. we are not going to demand the GST login ID and password. So this is a must thing. Then we need to take the login ID and password of GSTN portal, so that we need to prepare certain reconciliations before finalization of the tax audit. We'll discuss on that reconciliation part as well. So we need to take it. Certain essential things to do before the commencement of tax audit. हम लोगों ने वो डिस्कस कर दिया. The required documents to start the tax audit. We had also done the mandatory things which we need to check in case of new client or in case of old client. Now we are going to discuss on certain essential things
which is required before commencement of the tax audit. Tax audit को start करने से पहले we need to check these things very carefully. Okay, so ensure in the text. First, the opening balances are taken from the previous year audited balance sheet. This is the most important thing. We need to check the opening stock, the opening balances of capitals, the figures of various closing balances, which is showing as a opening balance in our current year data. So we need to check the same that there is no variation. कई बार क्या होता है, कुछ एंट्रीज होती है मिलाने के लिए 31st को हम लोग करवा देते हैं और देन आफ्टर द पर्टिकुलर एंटिटी इज गोइंग टू रिवर्स द सेम ऑन द 1st of April. So we need to check कि ऐसी कोई एडजस्टमेंट एंट्री तो यहाँ पर नहीं हो गई है, एंड इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट एंट्रीज देयर, इन दैट केस दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी एंट्री. ओके, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू चेक द सेम. अगर मैं आपको बोल रहा हूं इस सेशन में, इफ आई एम गोइंग टू से दैट वी नीड टू चेक दिस पॉइंट, वी नीड टू चेक दिस पॉइंट, देन दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी. You need to ask, if I am not giving you the reason for checking of that particular transaction, in that case this is your responsibility to ask with me that what is the requirement to check these things. Because जब हम लोग एनालिटिक्स में पहुंचेंगे ना, तब कहीं जाकर के हम इस काम को प्रैक्टिकल वे में कर पाएंगे. ओके, सो we need to take the opening balance and we need to check the same. Just a single second. My screen is visible to you. The PDF file is visible to you. Okay. So we need to check the opening balances with the last year closing balances so that we got the idea about the adjustment entry कि यहाँ पर कोई 1st अप्रैल को कोई adjustment entry तो उन्होंने नहीं की थी, और अगर की है तो उसका इफेक्ट क्या है. We need to identify the same. Next, maintain a list of indirect taxes and other laws applicable to the entity enterprises, including its various manufacturing units, service units, branches, godowns, along with the registration details and certificate under the relevant law. We had already discussed on that. We need to check the GST registration certificate. We need to check the Udyog and Udyam registration certificate. If the entity is registered under company's law, in that case, we need to check the MCA registration certificate, that is company incorporation certificate, LLP incorporation certificate. If the entity is trust, in that case, we need to check the registration certificate issued under section 12AA. So all those things are there. We need to check the relevant registration certificate and the address. Okay, here the purpose is that to identify the address of that particular entity so that we can check the genuineness कि सब जगह जो एड्रेस है वो यूनिफॉर्म है, कहीं पर भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा. Also, if there is multiple manufacturing units, in that case we need to check the rent agreement, we need to check the details on which that particular person taken that premises on rent, or if the premises is owned, in that case we need to check the ownership certificate. Okay, this is the must have in case of new client. Suppose अगर वो client हमारा पुराना है, regular client है, in that case we can check the same online or we can take it on WhatsApp, and all these things facilities are available. But in case of new client, this is my suggestion to you, just take the hard copy of these documents so that your file will be complete and you will be in a situation to check each and everything, to confirm each and everything. Vouchers related to all expenses incurred are properly maintained. We are also going to do the vouching in case of sales के लिए we are going to do the vouching. For purchase we are going to do the vouching, and for expenses we are going to do the vouching. But अभी भी अगर हम ये सोचते रहेंगे, if we are thinking that we are going to do the vouching from the physical files, from the physical sales invoices, from the physical purchase invoices, from the physical expenses invoices, in that case we are doing the waste of time. Because
Various facilities are available. We can check the same through those facilities. We just need to download the consolidated GSTR1, year-wise GSTR1 from the GSTN common portal, and we need to compare the same, reconcile the same with the help of the pivot table, and we need to put certain lookups in that particular Excel sheet. We just need to compare the GSTR1 yearly consolidated with the sales register. And if there is any deviation, if there is any difference, we need to ask the question from the client. That is what is the technique. अगर अभी भी हम लोग सेल्स रजिस्टर को लेकर के बैठे और एक एक सेल्स इनवॉइस पे टिक करवा रहे हैं, then this is not the time for that particular purpose. जो काम आधे घंटे में हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 से 3 दिन खराब करने वाले नहीं. जहां एनालिसिस पे हमको टाइम चाहिए, वी आर गोइंग टू गिव फुल एफर्ट्स, वी आर गोइंग टू गिव फुल टाइम ऑन द एनालिसिस पार्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट वेस्ट द टाइम ऑन वाउचर्स. If we want to certify the expenses, then we need to take the expenses ledger from the particular client. Entry wise expenses ledger we are going to take, and we are going to make the reconciliation with the GSTR to be written. Okay, and when we are going to make the reconciliations, if all the invoices are already found in that GSTR to be written, then everything is okay. We need to check the purchases, we need to reconcile the same from GSTR to be written. So ये आपका जो वाउचिंग वाला पार्ट है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. There is no requirement of anything that we need to identify or we need to check the physically. We can check from the common portal. All the bank statement of relevant financial period are provided to the auditor audit team after reconciling the balance in the books of accounts. कई बार क्या होता है, we are going to take the bank balance from the accounting software. यहाँ पर भी अभी हम लोगों के पास में ऑडिटर है, so I just want to ask कितने लोग हैं, they are going to take the bank statement in PDF file. Everyone is going to take the bank statement in PDF file from the client. Okay. तो आज कुछ अच्छे लोगों के साथ में हूँ. So just we need to take the bank statement in PDF file from the client, and we need to reconcile the closing balance with the books of account closing balance, that everything is okay. And also we need to briefly go through with that particular bank statement, किसके लिए, कि उसकी जो सेल्स है, उसकी जो परचेज है, उसका रोटेशन उसी पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट से हो रहा है. We need to check these things as well. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई फेक इनवॉइसिंग उसने कर दी है. सपोज हम एक एंट्री वहां पर चेक नहीं करने वाले हैं. वी जस्ट नीड टू चेक दैट there is a turnover of 5 crore rupees, and in case of bank there is a credit of around 6 crore rupees, 5 crore 50 lakh rupees. In that case this is okay. कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि बैंक स्टेटमेंट में जस्ट 1 crore rupees आ रहा है. So this is an question for us, so we need to check from this point of view as well. Okay. और also जो लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक कर रहे हैं, they just need to demand the bank statement, reconcile the closing balance with the बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड लास्ट 1 मंथ की एंट्रीज को अपने को सस्पेक्टेड तरीके से देखनी है. कोई ऐसा ट्रांजैक्शन उसने कोई लास्ट मंथ में कोई कंसोलिडेटेड एंट्री तो नहीं की है. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू केयरफुली आइडेंटिफाई और एग्जामिन द लास्ट मंथ बैंक स्टेटमेंट. Cross verify the details with the compliances made in various laws. For example, purchase and sales details from GSTR1, GSTR2B, GSTR3B, and other applicable returns. So that is what is the way from which we can do our vouching part. Okay. Now, reconcile other part of income reported in the profit and loss account with the Form 26 AS annual information statement and the bank statement. So for that purpose, you just need to generate the AIS, you just need to generate the Form 26 AS and reconcile the same in the Excel sheet from your sales register, from your trading and profit and loss account, that all income details are reconciled with the 26 AIS statement and the GST reports, so that it will be an external confirmation for us. Adequate documentation, especially management approval letters for the transactions like the sale and purchase of capital assets and receipt of loan and advances must be made available. Suppose you are going to do the audit of a particular private limited company, or you are going to audit for a limited liability partnership. In that case, this is the must thing. If there is any capital assets buying, if there is any receipt of loan, if there is any advance facility taken by that particular company or LLP, in that case, this is the responsibility of auditor, that auditor needs to demand the board resolution for that purpose.
ऑल्सो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर भी आपको ये वाला पॉइंट कवर करना पड़ेगा, यू नीड टू कवर दैट पॉइंट इन दैट एमआरएल लेटर। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एमआरएल लेटर विल बी डायनेमिक, वो आपका हमेशा चेंज होगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, सो दैट हम उन पॉइंट्स पे मैनेजमेंट से यहाँ पर कंसल्ट कर सके, बात कर सके। एज वेल इन केस ऑफ एलएलपी एंड कंपनी वी नीड टू चेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बोर्ड resolution. If there is any buying of capital assets, then there is requirement of board resolution. So these things are required. Now, ensure availability of proof of direct and indirect taxes paid, proof of statutory law compliances, that is ESI, PF, professional tax, gratuity, depreciation schedule as per income tax law. So these points are also relevant for us. We need to demand these challans as well. मैंने आपको बोला था कि we need to take the copy of challans, we need to take it in a digital form, there is no issue with that. Also, if the ESI, PF, professional tax and gratuity is applicable on that particular industry, in that case there is requirement to maintain the register for ESI, PF, gratuity. In that case we need to demand that particular register as well, क्योंकि कई बार क्या होता है, applicable है, they are going to file the returns, but they are just going to maintain the same in Excel sheet. उस Excel sheet में employees के basis पे they are going to pay the ESI, PF and they are generating the challan. But this is the mandatory requirement to maintain the register of ESI, PF, professional tax and gratuity. So at the time of our audit, we need to check the same. Okay. Proof of deduction and allowances claimed should be available. कई बार while doing the audit, the taxpayer is going to send us the amount only कि ये amount है, इसका reduction claim करना है, and we are putting the same in the return and we are claiming the deduction. No sir, this is our responsibility to take the document for each and every deduction. अगर वो बोल रहे हैं I had deposited PPF में 10,000 rupees, 20,000 rupees, in that case we need to demand the copy of that PF passbook. If the particular person is saying that there is an LIC investment for 50,000 rupees, in that case we need to take that LIC receipt. In case of NPS, we need to take the same. In case of our proof related to the children education, if the particular person is going to claim, in that case as well we need to demand the receipts of the payment regarding the education. Mediclaim insurance, we need to check that same, that कहीं दूसरे का कोई इंश्योरेंस का तो वो क्लेम नहीं कर रहा है. जब केवल इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है तब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स ऑडिट एंड व्हेन वी आर गोइंग एंड ड्यू टू दैट इनकम टैक्स ऑडिट, इफ वी आर गोइंग टू क्लेम एनी डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द particular investments, in that case this is our responsibility to take the documents as well. So these are the special point we need to be very much careful before starting the audit. So each and everything is okay for everyone. अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है देन प्लीज रेज दैट क्वेश्चन. अगर आपके पास में इन पॉइंट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीस पॉइंट्स, देन यू आर फ्री टू रेज द पॉइंट्स, रेज द क्वेश्चंस. Else we'll start a discussion on certain special points. Now, details of partners, members and their profit sharing ratio. आज इस सेशन का पर्पस यही है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है. जब हम लोग नहीं चेक करते हैं उन चीजों को, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जो हम लोग टैक्स ऑडिट के दौरान नहीं चेक करते हैं, या फिर वी आर गोइंग टू इग्नोर दोज पॉइंट्स. फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू टेक दिस टाइप ऑफ सेशन, सो दैट हम अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर सके. व्हाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर ऑडिट वी नीड टू चेक दीज पॉइंट्स एज वेल. ओके, केवल उसको फीड कर दिया एक्सेल के अंदर, उससे वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड चेक द पर्टिकुलर रेशियो ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये नहीं चलेगा. वी नीड टू बी स्मार्ट.
So Sureshji, there is a method for reconciliation of 26 AS and AIS. You need to use the Excel sheet. Okay. You need to develop one Excel sheet. In that particular Excel sheet, you need to convert your 26 AS file into the Excel, and also you need to take the various head of income from your profit and loss account and reconcile the same with the help of formula and with the help of private table and S lookup and V lookup. That is what is the way from which we can do this. Okay. And if you all require that particular type of Excel sheet or Excel tool, then I will consult with my team so that they will also prepare one Excel sheet and will mail the same to you. If everyone is requiring that particular Excel sheet, then we'll provide that particular Excel sheet. There is no issue, because in our office we are doing the same. टैक्स ऑडिट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी रिकंसिलेशन के लिए कोई भी एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट हो, इफ anyone has any type of requirement for the Excel sheet for doing any type of reconciliation regarding GST related reconciliation, TDS related reconciliation, company के केस में document related reconciliation, if anyone has any requirement regarding those particular documents, then you are free to connect with me over WhatsApp. Will provide you. There is no charge for that, because all these things are we are going to use the same in our day-to-day life of our practice. So now, details of partners, members, and their profit sharing ratio. This is also an important thing. Yes, we'll share the Excel sheet as well. There is no issue. For GST reconciliation, I will share with you the particular reconciliation in this session itself. We are going to discuss on that, the specific reconciliations. और अगर आप वो लोग वो reconciliations कर लेते हो, in that case, this is my guarantee to you, कोई भी point आपका tax audit में नहीं छूटेगा. From the checking of genuineness perspective. Okay, so we'll share with you. In our today's session, we are going to discuss the same in PDF file, but we'll share the complete Excel sheet as well. Okay. You just need to text me on WhatsApp number, or you can mail on consultwithbatuk@gmail.com, so that team will share with you that particular Excel file. GST related reconciliation will provide you by today evening or by tomorrow morning, and all other reconciliation regarding 26 AS or all other reconciliations, then we need to take a time of 1 to 2 days. We'll provide you by tomorrow evening or day after tomorrow morning. Okay. So details of partners, members, and their profit sharing ratio. कई बार क्या होता है, we are going to do the regular audit of our client, and that particular client is a partnership firm. In that case, we need to check that there is any change in the partnership or not. If there is any change in the partners or not, we need to identify the same. Okay, and if there is any change, in that case, we need to demand the copy of partnership deed from that particular client, and we need to check the profit sharing ratio as well, and accordingly we need to report the same in our tax audit report. जब हम लोग ऑब्जर्वेशन डालते हैं ना, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, एंड ड्यू टू दैट चेंजेस देयर इज एडिशन इन द पार्टनर्स और देयर इज रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. व्हाटएवर विल बी द सिचुएशन, वी नीड टू रिपोर्ट द सेम. हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर में चेंज हुआ, हमारे जो भी ऑडिट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू यूज, वी जस्ट नीड टू अमेंड दिस डिटेल्स इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. वी आर नॉट गोइंग टू रिपोर्ट द सेम इन द 3CD रिपोर्ट एंड द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. सो दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू शो द सेम. सो check the partnership deed, cross check the partner's name, profit sharing ratio. If any changes in name ratio compared to the last year, disclosure is required. The disclosure is mandatorily required. ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बिकॉज मैं कई सारे इनकम टैक्स ऑफिसर से जुड़ा हुआ हूं, और व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव एंड ऑल दैट, तो वो लोग बताते हैं कि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स भी हमारे सामने आते हैं व्हाइल डूइंग द स्क्रूटनी और व्हाइल चेकिंग द ऑडिट फाइल्स. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर दैट. नेक्स्ट, depreciation related particulars. Depreciation हो सकता है, there is a deviation in the depreciation chart. Books में depreciation कुछ और हो, and in the tax audit report we need to prepare the depreciation according to the income tax rules. Okay, so we need to check, compare the deviation
and we need to prepare the depreciation chart for the tax audit perspective from the income tax rules only. So prepare the schedule of assets and depreciation is required format. So we need to prepare the same in the required format because maximum of the professionals are going to do the tax audit from the software, and some people are there, they are doing the same from Excel sheet. So we need to check that all the applicable columns are there in that particular Excel sheet. Assets should be grouped on the basis of block of assets and rate of depreciation. Also we need to check जो block of assets जो उसका block है last year था, the same block is continued in the current year. We need to check it as well, and we need to carefully examine the rate of depreciation. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है 10 की जगह 15 लग रहा है. कई बार क्या होता है, motor vehicle, if I have a motor vehicle, in that case rate of depreciation will be 15%, and if I am going to use that particular motor vehicle in my business, that is business के transportation के लिए, in that case the rate of depreciation will be 25%. So these type of deviations are possible, and in this scenario we need to check that the depreciation is claimed in the proper way by that particular client or not. Verify whether opening WDV is correctly taken or not. This is our responsibility, and we had already discussed on that कि जब भी हम लोग audit करेंगे, we need to reconcile, we need to match the opening balance and closing balance. Okay, वहां पर तो at least कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए. Take any adjustment to the block of fixed assets during the year from available records. We need to check that there is any adjustments. That means there is any addition to the block of assets or there is any deletion to the block of assets. We need to identify this thing as well. Also, we need to identify adjustments related to GST, foreign exchange, grant, etc. are to be checked separately. We need to check if there is any grant is available. In that case, we need to check कि उस grant से उस fixed assets की value को कम किया गया है या फिर नहीं किया गया है, क्योंकि एक ही लॉ के अंदर या फिर एक ही जगह पे आप दो लॉ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो. यू आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम टू साइड्स. ओके, इफ यू हैड क्लेम्ड द ग्रांट, इन दैट केस यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. So we need to check the same. और वो कब आइडेंटिफाई होगा? When we are going to take the invoices of the fixed assets of that particular entity and we are going to check the particular ledger as well. तो अपने को पता चलेगा कि there is any grant. In that case we need to less that grant from that. Okay, and in case of foreign exchange, if the property is bought, if the capital assets bought in foreign currency, in that case we need to check the charges we need to add in the capital expenditure. Yes, there is mandatory format is available for the fixed assets. As per income tax rules, we need to report the income, the fixed assets chart in that particular format only. Okay, हम अपने मन से किसी भी फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं. हाँ, बुक्स में जो भी उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहां पर कुछ भी डेप्रिसिएशन का चार्ट हो सकता है, बट इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट द डेप्रिसिएशन चार्ट, द फिक्स्ड एसेट्स चार्ट इज टू बी इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. सो वी नीड टू चेक द सेम जिस अमाउंट पे, दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी फिगर पे कहीं उसने कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं क्लेम कर लिया, द टैक्स पेयर इज नॉट क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी पार्ट. वी नीड टू आइडेंटिफाई द सेम. Okay, and for that purpose we need to check the ledger. So when you are going to demand the all ledger, at that time you just need to demand certain specific ledgers separately as well. You need to take the fixed assets ledger, okay, and we need to convert the same in Excel sheet so that you can identify and match and reconcile the same with the data which is available on the income tax portal. Okay, you got the idea about IGST, CGST, SGST, and you can check that the particular taxpayer has not claimed the depreciation on the GST part. And rate, we need to check that rate is to be correct. The particular taxpayer has claimed the depreciation in the right way on the right rate. That is what is the way. Okay, so फर्स्ट जो हमने पॉइंट चेक किया, फर्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, फर्स्ट जो स्पेशल पॉइंट वे डिस्कस्ड अबाउट द पार्टनर्स मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड पॉइंट वाज रिलेटेड टू आवर डेप्रिसिएशन रिलेटेड पर्टिकुलर्स. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, बोनस, कमीशन और अदर पेमेंट्स टू द एम्प्लॉय. Bonus, commission and other payments to the employee. If there is any payment, bonus or commission to the employee, in that case we need to record the same in our 3CT. Okay,
In this clause, any sum paid to employee as bonus, ex gratia, commission are to be disclosed only if amount are paid and payable in lieu of profit and dividend. अगर आप अपने किसी क्लाइंट, अपने किसी एम्प्लॉय को, इफ यू आर गोइंग टू पे एनी बोनस कमीशन, सपोज यू आर गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ एन लिमिटेड एंटिटी, okay, and they are going to provide the bonus to their employees, and the bonus is part of their profit and dividend. In that case, the same is to be reported in the tax audit report. Sir, हो सकता है currently you are not doing the audit of an limited entity, but for analysis purposes you are going to check the audit report of that particular entity. आप में से कुछ लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते होंगे, फॉर शेयर ट्रेडिंग पर्पसेस दे आर आल्सो गोइंग टू चेक द बेनिफिट. ओके, सो फॉर दैट पर्पस ex gratia is a consolidated amount of the employee benefits. They are going to accumulate an amount, and for that purpose they are going to distribute certain amount in the ratio of profit, as a profit or as a dividend. Okay, these all are the accumulations on the basis of the employer employee relationship. This is not like a gift, but this is at a terms, that is bonus, commission, like that. और उसकी ही सैलरी के पार्ट से उसके सर्विसेज के लिए ये अमाउंट एक्यूमुलेट होते रहते हैं, and company is going to distribute that amount on annual basis, on 5 year basis, 10 year basis, whatever will be the policy of that particular company. Okay, so if the company is going to provide the same as a profit and dividend, in that case the same is to be reported in the tax audit report. एंड यू आर डीलिंग, हम कहाँ थे, हम उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शेयर ट्रेडिंग अगर देखते हैं, इन दैट केस आल्सो वी नीड टू चेक दीज थिंग्स कि कितना उसने अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ प्रॉफिट, कितना ईसोप है, कितना डिविडेंड है, सो दैट वी गॉट द आइडिया अबाउट द structure of that entity, the financial position of that particular entity. So आज जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, all these things are from analytical perspective only. Okay, now disclose details of the contributions received from the employee for various funds like provident fund, superannuation, ESIC. Such contributions are allowed as deduction only if made within the due date as per the respective law. So in form 3CD, when we are going to discuss on that form 3CD, I will try to discuss each and every clause of that form 3CD. And in that clause by clause analysis, हम लोग clause पे discuss करेंगे. वहां पर we need to report the ESI payment, the PF payment, and all those employee related payments in that particular tab in 3CD. Okay, so for that purpose we need to demand the challan, because without challan we cannot feed all those required details in that particular column. Okay, so we need to check the same. Now, employer is okay. Details of the amount debited to P&L account. यहाँ तक अभी हम जो भी बातें डिस्कस कर रहे हैं, they all are from interactive और analytical perspective. So आपको सारी की सारी चीजें समझ आ रही है? Is this session is helpful for you? So just a single second. So details of amount debited to profit and loss account being capital and personal expenditure. In that case also we need to report the same in the form 3CD. So जब ऐसी when you are going to read the complete 3CD form carefully, कई बार क्या होता है
कि जब हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं स्मॉल एंटिटीज की या फिर मीडियम एंटिटीज की, मैक्सिमम टर्म्स आर फीडेड एज निल निल, नॉट एप्लीकेबल, निल नॉट एप्लीकेबल. Okay, so for that purpose we need to identify that actual में nil or not applicable है, या फिर on the basis of financial statement, on the basis of the financial report of that particular client, of that particular entity is saying something else. Okay, so we need to identify the nature of the P&L profit and loss account terms, each and every entry which is made in that particular profit and loss account. In that trial balance, we need to identify that these expenditures are in the nature of personal, nature of not. This is our responsibility. Okay, although the fitting part of form 3CD is completely dependent on the client, because auditor is just going to certify. Okay, you all know this fact that 3CD is to be filed by that particular taxpayer only, but we are going to file it in maximum cases, we are going to feed it in maximum cases. So we are just a verifier, but for doing that verification, we just need to do the analysis of financial statement in a specific way. सारे के सारे जितने भी expenditure है, we need to identify that each and every expenditure is related to the business only. No expenditure related to the personal nature is to be reported in the financial statement. वो उसका benefit यहाँ पर नहीं ले सकता. So check whether the profit and loss account include any personal or capital nature expenditure. ओके और उसका हमको कब आइडिया लगेगा, जब हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द टर्म वाइज एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लेजर्स. उसने मान लो कोई फ्रिज खरीदा था, पर्टिकुलर टैक्सपेयर हैज बॉट वन फ्रिज एंड फ्रिज इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हमने उससे पूछा कि तेरे बिजनेस में तो फ्रिज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर ऑलरेडी तेरे बिजनेस के नेचर को देखते हुए वन फ्रिज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर बिजनेस, सो व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिज, एंड तूने वो लिया तो वो तेरे पर्सनल नेचर का है, वो तेरे बिजनेस के नेचर में काम ही नहीं आया है. सो वी नीड टू चेक दीज थिंग्स. ओके, हो सकता है बेसिकली अगर मैं भी अगर प्रैक्टिकली बात करूं, अगर मैं बेसिकली प्रैक्टिकली बात करूं तो उस केस में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. कई सारे लोग प्रैक्टिकल नेचर के भी मतलब पर्सनल नेचर के भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हैं, बट इफ देयर इज एनी ह्यूज डेविएशन इन दैट केस वी नीड टू रिपोर्ट द सेम इन द फॉर्म 3CD. दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी. यस, डेफिनेटली विल डिस्कस on the reconciliation from the GST perspective. Clause number 44 will also discuss and GST related points will also discuss. But कई सारे लोगों का ये मैसेज था कि कुछ पॉइंट्स जो टैक्स ऑडिट में भी हमको ध्यान में रखने चाहिए. वी नीड टू डिस्कस ऑन दैट. फॉर दैट पर्सपेक्टिव वी आर डिस्कस ऑन दैट, बट डेफिनेटली बी अश्योर्ड हम लोग कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है. This session is specifically from GST perspective in tax audit, so we'll discuss on that as well as we are going to discuss on other points. Okay, so generally following accounts are to be checked properly. For your example, for your illustration, there are certain accounts maintained or mentioned. You need to check these accounts very carefully. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिकॉज इनमें क्या चांसेस होते हैं, उसने अपनी खुद की पर्सनल कार का जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया एंड द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू क्लेम दैट एक्सपेंडिचर. इन दैट केस दिस इज नॉट अलाउबल. If the particular person is going to claim the repair and maintenance car related, in that case we need to check that the in the fixed asset chart car is available or not. वहां पर कार ही अवेलेबल नहीं है और अगर वो कार का एक्सपेंडिचर क्लेम करने जा रहा है, इन दैट केस वो सिचुएशन वहां पर गलत हो जाएगी. वी नीड टू चेक. ट्रेवलिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर, वी नीड टू डिमांड द वाउचर्स फॉर दैट ट्रेवलिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर. कहीं कोई पर्सनल नेचर का तो नहीं है, वाइफ के साथ घूमने के लिए गया और वो उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर में कवर कर रहा है. वी नीड टू चेक दिस सेम, बिकॉज डिपार्टमेंट इतनी तो हमसे डिमांड एक्सपेक्टेशन करता है कि व्हेन वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर ऑडिट एंड द टैक्सपेयर इज सेइंग दैट दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू माय बिजनेस, इन दैट केस एज अ ऑडिटर दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. वी नीड टू चेक द सैलरी एंड वेजेस, बिकॉज जब भी डिपार्टमेंटल ऑडिट होती है दे आर गोइंग टू डिमांड द क्रॉस कंफर्मेशंस. ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट वी आल्सो नीड टू टेक द क्रॉस कंफर्मेशन रिगार्डिंग सैलरी एंड वेजेस एज वेल. वी नीड टू चेक दैट सैलरी एंड वेजेस इन through bank account only, and if the expenditure is in cash then limited to 10,000 rupees. All these things are required. Stores, spare parts and consumption we need to check, and according to we need to check the register of the store spare parts. Depreciation we need to check. Legal, professional and consultancy fees we need to check. Also
you are going to do the audit of that particular entity, we need to also check that on certain provisions there is applicability of reverse charge mechanism. In that case, we need to check that RCM is paid that by that client or not. और अगर नहीं पे किया है, हमको उसको सजेस्ट करना है कि देख यहाँ पर तूने आरसीएम का पेमेंट नहीं किया, इस चीज का तूने पेमेंट नहीं किया, इससे क्या होगा, उस क्लाइंट को वैल्यू एडिशन लगेगा ड्यू टू ऑडिट मेरी बिजनेस की पर्सपेक्टिव में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। वरना क्लाइंट हमारे पास में डेटा लेके आया, जो जैसा था हमने उसकी ऑडिट कर ली और वी आर गोइंग टू पुट द नोट्स। आई एम ऑलवेज सेइंग इन माय फिजिकल सेशंस एंड इन माय वर्चुअल सेशंस कि वी नीड टू फोकस ऑन स्पॉट रेक्टिफिकेशंस। हमको ऑन स्पॉट रेक्टिफिकेशन करना है, जस्ट हमारा काम रिपोर्ट करना नहीं है। वी नीड टू रेक्टिफाई द थिंग्स इन द क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, सो दैट वी गॉट अ गुड रेम्यूनरेशन। तो उसको लगेगा कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है। If any such expense is found, then ensure correct adjustment treatment is adopted to rectify the mistakes. This is also our responsibility. Now, amount inadmissible under section 40A, that is अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, if there is applicability of TDS on the particular provisions, in that case we need to check that TDS is already deducted and deposited to the government before the due date. And if the TDS is not deducted and not deposited with the government, in that case, that particular expenditure is not allowed to that particular taxpayer. So this is our responsibility to check. Prepare, obtain statement showing payment made outside India along with the TDS details. If any amount, if any payment is made to outside India, that is foreign country, in that case, we need to check that proper TDS is deducted and the same is deposited to the government. Calculate TDS amount and cross check. If any shortage found, report the details of the shortage. Okay. We'll also share with you the TDS rate chart. Okay. So that you can identify the same, that the proper TDS is deducted by that particular client or not in different situations. You need to check. Okay. Now, you need to demand the TDS deduction, that is you need to demand the TDS return, and with that you can compare the same with the rates which is applicable on that particular business entity कि उसने specific rate से यहाँ पर TDS deduct किया है या फिर नहीं किया है. If TDS is deducted on such payment to NRI but not paid within the due date, such payment will be disallowed for the year, and report this, we need to report the same in the form 3CD. In case of payment to resident related to fees, commission, royalty, etc., no TDS is deducted or deducted but not paid. Such payment will not be allowed to the extent of prescribed limit. That is 30% of your expenditure will not be allowed. That is what is the limit which is applicable in the income tax sector. So we need to be very much careful when we are going to analyze the transactions, when we are going to check the लेजर, एंड मैंने आपको बोला यू नीड टू डिमांड द लेजर, यू नीड टू डिमांड द ट्रांजैक्शंस लेजर इन एक्सेल शीट. तो आप उसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हो. यू कैन पुट द फिल्टर दैट ऑल दोस एक्टिविटीज ऑन व्हिच टीडीएस इज टू बी एप्लीकेबल, एंड यू कैन कंपेयर द सेम विद द टीडीएस रिटर्न, सो दैट यू गॉट दैट आइडिया दैट आवर रिकंसिलिएशन इज इन अ प्रॉपर वे. दैट इज व्हाट इज द वे. सो we'll share with you the ways as well for doing the audit in an effective way. Payment of interest, remuneration, commission inadmissible under section 40B and 40BA. Check whether the payment of interest, remuneration, commission etc is as per partnership deed. मैंने अभी आपको बोला था, if you are going to do the audit of a partnership firm, in that case you need to check that the remuneration, interest and commission is as per that particular partnership deed. सपोज उस पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट का 12% लिखा हुआ है, एंड द पर्टिकुलर बिजनेसमैन इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%. इन दैट केस दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी. इस तरह का अपने को एनालिटिकल वहां पर होना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को हमको देखना पड़ेगा. इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एलएलपी, वी नीड टू चेक द एलएलपी एग्रीमेंट. इन दैट पर्टिकुलर एलएलपी एग्रीमेंट each and everything is already mentioned and we need to identify these things. In case of company, we need to check the MOA AOA, and we got each and everything in that particular MOA AOA. In case of our regular client, we just need to identify that there is any changes from the last year or not. But for new client, specifically for new client, we need to check the MOA AOA, the LLP agreement. In case of partnership deed, the partnership deed we need to check.
If any excess payment or not allowed payment as per the deed made, disclose the details and disallow the same. You need to enhance the profit from that amount. Disallows and deemed income under section 40A3. Okay. Obtain list of payment with amount more than 10,000 rupees made otherwise than by way of account pay, check and draft. All those expenditure is made in cash about 10,000 rupees, that expenditure is not allowed. जब हम लोग हमारे क्लाइंट की ऑडिट करते हैं और हमको कोई बड़ा ट्रांजेक्शन दिखता है एट दैट टाइम, इन जर्नल प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़वा देते हैं. हम हमारे क्लाइंट को बोलते हैं जस्ट बाइफरकेट दिस अमाउंट इन 5,000, 7,000, 8,000. If you are doing the same for certain expenditure, this is okay. But if your client is making maximum transactions above 10,000 rupees in cash and you are doing the practices to bifurcate the amount, so at the time of audit, this will be a dangerous situation for your client and as well for you, because this is clearly showed that there is a planning involved. So we need to check these details. We need to suggest our client don't do these things. और जिस client की हम लोग regular audit कर रहे हैं, we need to share one guidelines to that particular client. इस year के अंदर आपको ये following करनी. Verify the cash book and bank to ensure the completeness. In case of transport business, limit will get enhanced to 35,000 rupees. We need to check the same. Now, provision for payment of gratuity not allowable under section 48(2). If the particular employee is going to left that particular entity, in that case there is a payment of gratuity. But gratuity भी कब मिलती है, अगर वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन तक उस इंडस्ट्री के अंदर रहता है, उसके बाद में उस इंडस्ट्री को छोड़ता है. In that case gratuity is allowable. Okay, so we need to check the same through the employer-employee agreement. Obtain schedule of gratuity calculation. Check the amount of gratuity calculated and payable to the employee who left. Check actual payment date. It should not be after the due date of applicable. Indicate details of provision for gratuity contribution and gratuity payable. We need to identify the same. तब तक का हम लोग gratuity register ले लेंगे. We can check the same कि कितना amount इसके cumulative हुआ है under the head of gratuity and कितना amount उसको pay किया जा रहा है. And the term of that gratuity has already fulfilled by that particular employee or not. We need to identify the same. Then after that expenditure will be allowed to the particular taxpayer. Okay. Any sum paid to employer not allowable under section 48(2). Obtain the list of payment made by an employer towards the setting up and contribution to any fund, trust, company, etc. other than PF, gratuity and superannuation fund. If payment made to other than above fund, disclosure is required. अगर कोई एम्प्लॉय ईएसआई पीएफ के अलावा किसी और फंड के अंदर, सुपरएन्युअल फंड के अलावा कहीं और अगर वो पैसा जमा कराता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, इन दैट केस दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एंड वी नीड टू रिपोर्ट द सेम इन द 3CT. So this is the specific situation that we need to check these things. If the particular client is going to report these types of investment in the financial statement, then we need to check that the amount is to be deposited on these three type of funds only. And if the taxpayer is going to report invest the amount in other funds, in that case that expenditure is not allowed. If there is any contingent liabilities available, in that case we need to check and report the same. क्योंकि contingent liability को हम लोग balance sheet के नीचे भी show करते हैं. We are going to report that contingent liability below the balance sheet as well, and we need to report the same in our observation part as well. So we need to be very much careful for that. Amount of deduction inadmissible in terms of section 14A. Check if assessee has earned any exempt income. Suppose the assessee has earned the agriculture income that is exempt under income tax act. Trace the income expenses. If such expenses are added, then back to taxable income. So expenditure is not allowed because आप exempted income पे tax नहीं दे रहे हो, then you are not eligible to present the expenditure related to that exempted income in your profit and loss account. We need to carefully examine.
सपोज उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में कोई एग्जेम्प्ट इनकम डाली है, इन दैट केस वी नीड टू चेक दैट there is no any expenditure related to that exempted income debited in the profit and loss account. And if you found that particular type of expenditure, then we need to add the same in our profit, in the profit of that particular taxpayer, and report the same in our observation tab. Amount inadmissible under the proviso section 36(1). Check if assessee has any loan paid or accrues interest. If such borrowed loan is not to use, then such expense are not allowed as expenses. Suppose आपने कोई CC की लिमिट ली, a particular taxpayer is going to take that particular cash credit limit. In that case, we need to check the bank statement of that cash credit कि उसने वो amount अपने business purpose के लिए काम में लिया है. Suppose बैंक से उसने वो loan fund finance करवा दिया, but the particular taxpayer is not going to use that amount in the business purpose. In that case, the interest related expenditure will not be allowable to that particular entity. And we need to identify the same through the narrations which is available in the bank statement. That is what is the technique. So चलो इस लिस्ट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, then after we'll start our further discussion. Acceptance repayment of non-deposit specified sum under section 269 SS, 269 ST, 269 T. So all these things we need to check. Sir, आपको समझ आ रहा है ना? My speed is okay for you because we have a limited amount of time. We need to cover multiple things, but I will try my best to maintain my speed. Still, if anyone is not getting the points, then please comment in the chat box so that I can manage my speed. So now 269 SS, 269 ST, 269 T is there. In that case, we need to report the loan taken and the repayment thereof. And these loan are from the unsecured parties. Okay. So for that purpose, when we are going to check the financial statement, if there is any income related to interest, in that case we need to take or we need to demand the interest ledger. और जब हम लोग interest का ledger demand करेंगे, we need to demand that particular interest ledger in Excel sheet. और जब हम उसको एक्सेल सीट में लेंगे, then we need to put one filter that all unsecured loan related parties is to be shown with filter and all other parties is to be shown with the filter. Then we need to identify that जो भी पार्टीज है जो अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी उस टैक्स पेयर ने पे कर दिया है या फिर नहीं किया है, दैट पर्टिकुलर टैक्स पेयर हैज पेड द जीएसटी ऑन दैट द एंट्रीज ड्यू टू बिजनेस. On unsecured loan, there is no applicability of GST, but on interest due to trade or the interest in nature of trade, in that case there is requirement of GST payment. And जो उसकी unsecured वाली list है, we can cross check from the list which is given in the 3CD form. That is what is the way we can use. That is what is the technique we can use. Okay, so 269 SS के अंदर if there is any amount accepted or taken about 20,000 rupees, in that case we need to report the same. And in case of 269T, we need to report the payment schedule. Okay, if there is any payment during the year, we need to report the same. So that is what is the thing we need to check very much carefully. If there is any TDS payable is there on certain expenditure related to interest expenditure, commission expenditure, or there is any contract, that is 194C, technical fees, professional fees, rent of plant and machinery, rent of building, in that case TDS is to be deducted. In that case, first we need to identify from the expenditure and then we need to check that proper TDS is paid by that particular taxpayer or not. We need to identify the same. In case of domestic company, details of distribution dividend distributed profit under section 194 1150, we need to check the same that DDT is correct as per the law, and जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उतना ही उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकाउंट अंडर शो किया है. All those things are as per the law. We need to check these things. Then the last thing, because dividend distribution tax pay, I am going to share with you complete one file. Okay, so there is no issue with that. Details regarding turnover, gross profit, etc. अब वो वाला काम हो गया जो हम लोग रेगुलरली करते हैं. हमारे
प्रीवियस जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट वी आर गोइंग टू कंपेयर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट ईयर. वी आर गोइंग टू चेक द स्टॉक which is maintained by the particular industry for this year, and from the last year we are going to compare. We are going to check that there is any huge variation or not, and if there is any huge variation, in that case we are going to demand the reasons for that huge variation, and all those things are there. So in that case, the last, that is information is available in the form number 3CD regarding the deviation in the gross profit, in the net profit, in the stock. We need to check the same. We need to analyze these things, that if there is any deviation in the gross profit, if there is any deviation in the net profit, in that case we need to identify the reasons of that deviation, कि यहाँ पर ये जो deviation है इसके पीछे क्या reason है. Okay, so these are the all important point we need to be taken care of very carefully. Okay, so जहां हमने सेशन स्टार्ट किया था उस समय we had started our discussion with the basics of tax audit. Okay, we had started our discussion with the basics of tax audit. With that we had discussed about the tax audit terms in case of new client, in case of old client. Also we had done the certain checklist, that is important check we need to do before starting that particular audit. And recently we had covered the complete concept, the complete important point of tax audit we need to be take care while initiating or while doing the tax audit. So just confirm me once that each and everything is okay for you, so that we can start our discussion on the point of our GST perspective. सबके लिए सारी की सारी बातें ओके है, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. Just give me one important call is there, just one. So now we are going to start our discussion on certain important points, certain important reconciliation from GST perspective, which is very much required while doing the tax audit. और literally जब हम लोग tax audit करते हैं, अगर हम लोग ये वाले reconciliation बना लें और कुछ ये वाली डिटेल अगर हम लोग प्रिपेयर कर लें, इन दैट केस वी कैन डू द ऑडिट इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑन अ टाइमली बेसिस. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया टीडीएस से रिलेटेड, वी नीड टू प्रिपेयर वन एक्सेल शीट एंड वी नीड टू रिकंसाइल द फिगर for 26 AS, and from AIS TIS we need to prepare the Excel sheet and we need to do the required reconciliation, so that उससे क्या होगा, एक तो टाइम कम हो जाएगा, काम में एक्यूरेसी आ जाएगी, और जो भी चीज हम लोग रिपोर्ट करने हैं that will be in a perfect and efficient way. So first reconciliation, whenever you are going to do the finalization of your tax audit, I am just going to use the word that when you are going to do the finalization of the tax audit, or when you are going to do the tax audit, while conducting the tax audit, you first need to prepare this reconciliation, that is your turnover reconciliation, because your turnover from the GSTN portal and from the tax audit portal should be matched, should be reconciled. If there is any deviation, in that case, as a professional, as an auditor, this is your responsibility, that you have the reason of that differences. Because when we have this facility, then we need to use this facility. So
First of all, we just need to reconcile the turnover of financial statement with the turnover as per the GST records. We need to reconcile the turnover from the GSTR 1 and 3B as well. For that purpose, we may use the following reconciliation format. Although I will provide you the format in the Excel sheet. Okay, just for your reference, these formats are in PDF file. We'll also share with you the Excel file. So first you need to take the turnover as per the financial statement. Okay, and turnover as per the GST record, and for that purpose you need to take the turnover of GSTR 3B. You need to take the turnover of GSTR 3B, and after that, if there is any difference, in that case you need to record the reasons of that particular differences. Now your first question is that why we need to reconcile the same from our GSTR 3B. हम यहाँ GSTR 1 नहीं ले सकते हैं. So my point is that the revenue of the government is only due to that GSTR 3B, because government is getting that amount when the taxpayer is going to file the GSTR 3B return. GSTR 1 में मेरी सेल्स 100 करोड़ शो कर दूं और GSTR 3B में अगर मैं 10 करोड़ पर ही टैक्स पे करता हूं, in that case government is getting the revenue only on the basis of the GSTR 3B, not on the basis of the GSTR 1. Hence, when we are doing the tax audit, we need to reconcile the turnover from GSTR 3B. Okay. So we'll share you the reason of each and every my words and each and every my lines. Okay. Now, एक डाउट आया कि सर 3B में मान लो मैंने 10,000 करोड़ पे या फिर 10 करोड़ पे मैंने जो है टैक्स पे कर दिया. पर्टिकुलर टैक्स पेयर has paid the tax on 10,000 rupees in the GSTR 3B or 10 crore rupees in GSTR 3B report return. बट अगर उसने GSTR 1 में सेल्स रिपोर्ट ही नहीं की, अगर उसने अपने GSTR 1 में सेल्स ही रिपोर्ट नहीं की, उसने अपने GSTR 1 में 8 करोड़ रिपोर्ट की, 7 करोड़ रिपोर्ट की, और द पर्टिकुलर टैक्स पेयर इज गोइंग टू डू द फेक इनवॉइसिंग एंड रिपोर्टेड 20 crore sales in GSTR 1, in that case how we can identify? So for that purpose, first you need to reconcile your turnover with your GSTR 3B, and then after you need to prepare one reconciliation between GSTR 1 and 3B of that particular financial year. Suppose you are going to do the audit of financial year 22-23. In that case, we are going to reconcile first the turnover with the GSTR 3B, and then after we are going to reconcile the GSTR 1 and GSTR 3B. So for that purpose, we have this reconciliation. GSTR 1 taxable value IGST, CGST, SGST. GSTR 3B taxable value IGST, CGST, SGST. If there is difference, then we need to take the reasons on records. Then we need to take the reasons on record. So, sir, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. I am saying that whenever there is a difference, then we need to ask for the reasons of that particular difference. हो सकता है GSTR 1 और 3B में डिफरेंस और उस बंदे ने 16/4 की जो टाइमलाइन है तब तक उसके डिफरेंस को रिजॉल्व कर दिया हो, उस चीज को रिजॉल्व कर दिया हो. In that case, we need to take the note of it कि उसने वो रिजॉल्व कर लिया है, so that as a auditor we had completed our responsibility. हमने हमारी responsibility निभा दी. That is what is the point. Next, third point. First we need to discuss on third reconciliation, then after we'll discuss certain points, because while doing the tax audit there are just 4 reconciliations are there, but while filing the GSTR 9 and 9C, I have a complete tool for reconciliation, and I have a complete tool for file the GSTR 9 and 9C. The all things we had covered in that particular Excel tool. But in our session we are just going to talk on that tax audit perspective. Okay, so in case of tax audit, there are 4 reconciliations are required. First one was related to the reconciliation of turnover. Second was related to the reconciliation of GSTR 1 and 3B. And third one is related to input tax credit reconciliation. Sir, what do you mean by that input tax credit reconciliation? Whatever the input tax credit the particular taxpayer has claimed in the GSTR 2B return, we need to reconcile the same with GSTR 3B. That means जो भी उसने रिटर्न, जो भी उसने इनपुट क्लेम की है, वो सारी की सारी GSTR 2B में अवेलेबल है, so that we got that idea, we get this thing that the client is a genuine client and he has claimed the input tax credit as per the 2B. That means counterparty has also filed the GSTR 1 return, so that we can believe on the genuineness of that particular client.
So this is also in a one way, this is also an important reconciliation we need to identify. अब हम लोग अगर परचेज रजिस्टर की वाउचिंग नहीं करते हैं, परचेज इनवॉइसेस की वाउचिंग नहीं करते हैं, then also this is completely okay because we had already verified the same from the GSTR to be written. We had verified the purchases from the GSTR to be written in a complete way, in a complete manner. Now, fourth reconciliation. This is our third reconciliation. This is our fourth reconciliation and this is the most important reconciliation while doing the tax audit. अगर ये वाला reconciliation properly हो जाता है, if you are going to prepare this reconciliation in a proper way, then this is my guarantee कि अपनी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एकदम प्रॉपर वे में हो गई है, उसकी सेल सही है. अगर ये वाला रिकंसिलिएशन हो जाए, इन दैट केस दिस इज एन कंप्लीट एश्योरेंस फॉर यू दैट द सेल्स इज प्रॉपर, द परचेज इज प्रॉपर, द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इज प्रॉपर, द एक्सपेंडिचर इज आल्सो प्रॉपर, एंड इफ द पर्टिकुलर टैक्स पेयर क्लेम द रिफंड अंडर जीएसटी, देन दिस इज आल्सो प्रॉपर. For that purpose, we need to reconcile the closing balance of input tax credit, the closing balance which is mentioned on the GSTN portal in the electronic credit ledger, and the closing balance which is given in the books of accounts. We need to reconcile both these figures. And if there is any difference, in that case, we need to demand the reason of the differences, that why there is differences between these two. अब यहाँ पर इन दोनों में 99% केसेस में डिफरेंस आएगा. There will be a difference in 99% cases. बस for that purpose you need to demand the reconciliation. हो सकता है उसके 2B में कोई इनपुट नेक्स्ट मंथ आई हो तो वो नेक्स्ट मंथ क्लेम करेगा जीएसटी पोर्टल में, बट बुक्स में वो एंट्री उसने ऑलरेडी कर दी हो. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू check these things. We need to demand the reconciliation कि इतना इनपुट उसने, यहाँ पर सपोज as per GST portal there is a credit of 10,000 and if there is books में there is a credit of 9,000. In that case there is difference of 1,000 rupees. In that case अपन उससे पूछ लेंगे why there is difference, तो वो बता देगा कि ये मैंने लास्ट ईयर रिलेटेड क्लेम किया है या फिर नेक्स्ट ईयर रिलेटेड क्लेम किया है. और if we are getting the sufficient reply, the efficient reply, in that case the sales is okay, purchase is okay, and the expenditure is also okay, you can say the client is a genuine client on the basis of the closing input tax credit balance reconciliation. Also, for your regular clients, you may suggest certain accounting changes in that particular client books of accounts, so that whenever you are going to reconcile the input tax credit balance with the GST portal and books of accounts, that will be matched. For that purpose, that client just need to create one ledger, that is unclaimed input tax credit account. Suppose in a particular month, certain input is not available in 2B, but the particular taxpayer has invoices. But due to non-availability in the GSTR to be returned, that client is not able to claim. So for that purpose, we just need to prepare one entry and transfer that particular input into unclaimed input tax credit ledger. और next month जब वो input मेरी आ जाएगी 2B में, at that time I am going to transfer that particular input from input tax unclaimed ledger to IGST, CGST, SGST. So that is what is the way is also available. You can suggest to your client, you can consult to your client, so that क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा ऑडिट को चेंजेस करवा रहा है. तो केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू द ऑडिट ऑफ एट दैट टाइम हम लोग को सजेशन दे रहे हैं. उससे अच्छा है फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो वी नीड टू डू सर्टेन सजेशंस, वी नीड टू गिव सर्टेन सजेशंस. सो we had discussed 4 type of reconciliations from GST perspective. These reconciliations are okay for you? Just confirm me once. As you are doing the tax audit, you are not handling the GST work. For that purpose, I am saying that these 4 reconciliation are required. One is your turnover reconciliation, GSTR 1 and 3B reconciliation, input tax credit reconciliation, and closing balance reconciliation. And for doing all these 4 reconciliation, there is no requirement of any additional document. और ये सारे के सारे रिकंसिलिएशन में कोई एक्स्ट्रा टाइम भी आपको नहीं लगने वाला. ये जो मैंने 4 डिस्कशन किया है रिकंसिलिएशन, दे आर स्पेसिफिकली फॉर योर टैक्स ऑडिट ओनली. They are not required at the time for 9 or 9C का कोई उससे लेना देना doing the 9C or not. Okay, and all these details are available because financial statement की सेल्स आपके पास में होगा, GST का टर्नओवर होगा.
You have your GSTR 1 and 3B, so you can check the same. 2B or 3B input, you can download the sheet from the GSTN common portal. You need to log into the consolidated month-wise sheet is also available. Closing balance you can take from electronic credit ledger and from books, because books is also in your hand. So there is no extra efforts. Without efforts or without a limited amount of efforts, you can got the complete CIBIL report of that particular client from GST point of view, and you can give ranking to that particular client. और सपोज मानो ना, अगर वहां पर कोई मेजर डिफरेंसेस है जीएसटीआर 1 और 3B में, क्लोजिंग बैलेंसेस में, और अगर आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, व्हाई देयर इज डिफरेंसेस, तो उसको लगेगा पुराना सीए कोई सही से काम नहीं कर रहा है क्या, तो वो प्लान कर सकता है सीए चेंज कर देगा. सो दिस इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी. सो just we need to check these 4 points, and these are very easy. There is no rocket science is there. Now carefully check the terms of financial statement. I am just going to share you certain financial terms for you. You need to check these financial terms very carefully while doing your tax audit. Okay, this is also our part. I know this is more relevant for GSTR 9 and 9C, but from tax audit perspective, we need to check these things as well. So जीएसटीआर 2B और बुक्स के बीच में रिकंसिलिएशन के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं. 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगेगा. यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू द जीएसटीएन पोर्टल. अंडर रिटर्न्स टैब यू गॉट द रिकंसिलिएशन टैक्स आईटीसी कंपैरिजन. इन दैट केस यू नीड टू डाउनलोड द शीट, एंड शीट के अंदर आपका 2B भी आएगा और 3B भी आएगा, और उन दोनों का डिफरेंसेस भी आएगा. यू जस्ट नीड टू चेक दैट देयर इज ह्यूज डिफरेंस और नॉट. That is what is the way. I am not just saying you that you need to reconcile the 1 rupee, 10 rupee, 50 rupee, 100 rupee or 500 rupees. मोटा मोटी अपने को आइडिया लग जाना चाहिए कि क्लाइंट इज जेन्युइन. वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, और दिस इज अ टास्क ऑफ जस्ट 5 minutes. You can check it online. Is that okay? Just log into GSTN. No, there is no requirement of party-wise reconciliation. You are doing the tax audit. You are not doing the 9 or 9C. We are just going to check the genuineness of that particular client. Party-wise reconciliation is not required. कि उस पार्टी ने पर्टिकुलर रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया है, या फिर पार्टी सेम है या फिर नहीं. अगर अमाउंट मैच हो जाएंगे, इन दैट केस देयर इज 99% एश्योरेंस दैट एवरीथिंग इज ओके. Although, if you want the party-wise reconciliation, in that case, whatever GST software you are going to use, in that particular software, also there is facility of party-wise reconciliation. You just need to demand the purchase register. You need to put that purchase register in your software. You will got the consolidated report within 5 to 7 minutes with the complete detail that these parties are not in 2B, these parties are not. So we can check this same. How we can do it in a 5 minutes? So for that purpose, you just need to log in to the GSTN portal. When you will log in, you just need to log in. First, we need to discuss the process, how we can check in 5 minutes. Then I am going to take the next questions. You need to log into the GSTN portal. Under returns tab, you got the tax return and ITC comparison. This tab will be available. That is tax return and ITC comparison. If anyone require, then you may connect with me. I will share you the screen recording of that particular. जैसे ही आप उस टैक्स रिटर्न और आईटीसी कंपैरिजन पे क्लिक करोगे, एट दैट टाइम आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा ईयर का. यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 22-23, एंड इन दैट केस वेरियस 5 to 7 tabs were there, and you can check your sales, you can check the purchase reconciliation, all the reconciliations are there. You need to select the ITC comparison other than import. और जब आप इस टैब को सेलेक्ट करोगे, यू गॉट वन शीट. यू नीड टू डाउनलोड दैट शीट इन XML फाइल, एंड दैट फाइल विल बी द कंपैरिजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर 3B, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर GSTR 2B, एंड द डिफरेंसेस. एंड इफ मोटा मोटी वो चीज मैच हो रही है, इन दैट केस दिस इज एन एश्योरेंस फॉर यू दैट द क्लाइंट इज अ जेन्युइन क्लाइंट. ओके,
We are not just going to do the 9 and 9C so that we can do the deep analysis. We need to identify the genuineness of that particular client. And if there is mismatch, और अगर वो mismatch एक level तक है, in that case, okay, there is no issue because we are doing the tax audit. But if you found that in 2B there is just input of 10,000 rupees and client is claiming 15 lakh rupees input tax credit, in that case this is an indication कि कहीं यहाँ पर fraud तो नहीं हो रहा है, कहीं यहाँ पर फेक तो नहीं है, या फिर 10 lakh की इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में आ रही है और क्लाइंट इज क्लेमिंग 13 lakh rupees इनपुट क्रेडिट, देयर इज डिफरेंस ऑफ 3 lakh rupees. इन दैट केस दिस इज ऑन अ सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कि कहीं कोई क्लाइंट ने फेक इनवॉइसिंग तो नहीं की है या फिर फेक परचेजिंग तो शो नहीं कर दी है जस्ट टू रिड्यूस द प्रॉफिट. So all these things we need to check, and we can check the same from the GSTN portal. Is that okay for each and everyone? Suresh ji, is that okay? Mahit ji, is that okay? And Bhumi ji, you got my point? Now, there are certain terms are available, and on all those terms, we need to deeply analyze the things. In profit and loss account, you found discount. In that case, you need to check the discount ledger. Although you are going to do the complete scrutiny of that all ledger. Okay, you are already doing the same. But now, after this session, I am just going to give you certain clues that these points are very much important. We need to check these points with certain other mindset or certain GST perspective. We need to check the discount. We need to demand the discount ledger. Convert the same in Excel, or you can generate the same from Excel. और अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है, in that case you need to download the same from the accounting software of that particular client. Okay, so discount ledger you need to generate, convert it in Excel. Now you need to identify that what amount of discount is related to GST and what amount of discount is related to on which GST is not applicable. Suppose there is certain trade discount is available, certain financial discount is available. For financial discount, there is no GST will be applicable. For trade discount, there is applicability of GST. So you need to identify the nature of the discount. Sir, how we can identify the nature of the discount? When you are generating that ledger, you are going to check there is debit note, there is credit note. If the series is available, in that case, that discount is related to trade. And if there is any rate difference, अब आपने वो डिस्काउंट देखा, अब आपको चेक करना है the difference is due to rate difference. When you are going to check the rate difference account or post sales discount, you found that particular discount, and on that particular discount, if the client अगर उस डिस्काउंट पे भी उसने आउटपुट को एडजस्ट किया है या फिर इनपुट को एडजस्ट किया है, इन दैट केस वी नीड टू से टू अवर क्लाइंट के आपको ये डिस्काउंट के साथ जीएसटी को एडजस्ट करने की परमिशन नहीं है, बिकॉज दिस डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल डिस्काउंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनवॉइस और before that particular time you had not decided the terms of that particular discount. So special care in case of rate difference. जैसे ही आपको रेट डिफरेंस का पॉइंट मिल जाए, यू नीड टू केयरफुली एग्जामिन, क्योंकि रेट डिफरेंस हमेशा प्रोडक्ट सेल करने के बाद होता है. अगर वहां पर कोई डिस्काउंट की लेन देन है, देन दिस डिस्काउंट विल बी द फाइनेंशियल डिस्काउंट. वी नीड टू चेक द सेम कि कहीं उसने वहां पर तो जीएसटी का एडजस्टमेंट नहीं कर दिया है. सेम इन केस ऑफ इंटरेस्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. वी नीड टू जनरेट द इंटरेस्ट लेजर. वी नीड टू कंपेयर द सेम फ्रॉम द अनसिक्योर्ड लिस्ट, दैट इज 269 SS, which is already available in the form number 3CD, and we need to check that all those parties which is related to finance, that is unsecured loan, GST will not be applicable, but other interest, that is trade interest, पर GST applicable हो जाएगा. मैं ये सारी चीजें इस पॉइंट से भी बता रहा हूं कि जब हम लोग टैक्स ऑडिट करते हैं और हमने अगर इन चीजों को वेरीफाई नहीं किया, जब हमने इन चीजों को वेरीफाई नहीं किया, इस इन केसेस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, एट द टाइम ऑफ जीएसटी ऑडिट, होगा क्या, वहां पर वो क्लाइंट हमको गालियां देगा कि यार जब तुमने टैक्स ऑडिट के लिए तुमको पता था कि इन टर्म्स पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, आपने हमें गाइड ही नहीं किया, तो आप क्या टैक्स ऑडिट कर रहे थे. ऑल्दो वी आर डूइंग द टैक्स ऑडिट, बट वी नीड टू चेक दीज थिंग्स आल्सो फ्रॉम द माइंडसेट. Financial discount, ऐसा discount, there are two type of discount is available. One is trade discount, another is financial discount. All those discounts for which the terms has not been decided at the time of invoice, in that case that discount will be considered as in a financial discount. और उस discount के लिए कोई भी GST के adjustment नहीं होंगे. You just need to adjust the taxable value. तो हमको ये चेक करना है कि क्लाइंट ने उससे रिलेटेड आउटपुट तो कम नहीं कर दिया है.
If there is any commission, in that case, we need to check that the GST is paid on that commission. If there is rent, in that case, we need to check that GST is paid or not. Because जब आप लोग ये टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करोगे और सपोज एनी रेंटल इनकम इज देयर, इन दैट केस रेंट विल बी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay, and you are just going to take the turnover of the trading account. In that case, automatically यहाँ पर difference आ जाएगा, and you need to report the reason that this difference is due to the rent, this difference is due to the commission. If there is any AMC charges, that is accounts maintenance charges, in that case we need to check that GST has already been paid on that particular type of charges or not. And if there is any RCM oriented expenses, we are also going to discuss on the list of services on which reverse charge mechanism is available. And while checking the financial statement of that particular entity, you found any term on which RCM is to be applicable according to the list. In that case, you need to ask to the client that RCM is paid by you or not. Suppose आपको कोई legal fees दिखी, in that case you need to, while checking the ledger, you need to check that RCM is already paid or not. अगर नहीं पे किया, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन टू द क्लाइंट कि आपने इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस पे यहाँ पर आरसीएम नहीं पे किया है, ऑल्दो आरसीएम इज एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर. Now, carefully examine the accounting aspects. This is also our responsibility while doing the tax audit, that accounting is in a proper or not. कई बार क्या होता है, दे आर गोइंग टू क्रिएट द क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स रिलेटेड टू डिस्काउंट, और वो पार्टी क्या करता है, सपोज दैट डिस्काउंट इज रिलेटेड टू सेल्स, और अगर उसने वहां पर उस डेबिट नोट, उस क्रेडिट नोट, उस लेजर का हेड परचेज सेलेक्ट कर लिया, इन दैट केस जहां पर मेरी आउटपुट कम होनी चाहिए वहां पर मेरी इनपुट रिवर्स होगी. सो दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली एन रॉन्ग ट्रीटमेंट. So we need to identify the things when you are going to check the discount ledger. In that case, you need to also cross verify the nature of that particular transaction, particular discount. अब question होगा sir, how we can identify? So जो parties उस discount से related है, we need to check that these parties are purchase related or sales related. क्योंकि ये वाली गलतियां बहुत बार मिलती है कि उसने लेजर क्रिएशन के टाइम पे हेड गलत सेलेक्ट किया, परचेज की जगह सेल्स कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक्सपेंसेस की जगह डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिया. इन दैट केस देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन योर फाइनेंशियल्स. तो एज अ टैक्स ऑडिटर वी आल्सो नीड टू चेक द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. और कई बार क्या होता है, हम एक छोटी सी गलती करते हैं, उसके कुछ गड़बड़ है, सपोज कुछ लेजर में कुछ इश्यू और हमको वो आइडेंटिफाई हुआ, we are going to change the same in our tax audit report, but we are not going to suggest our client to make the changes in the accounting itself. So this is my humble request to you, जब भी आपको ऐसे कोई पॉइंट फाइंड आउट हुए, you just need to say your client or guide your client that just make the changes related to these effect in your books of accounts immediately. वरना क्या होता है, अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ और जा रहा है और उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ और ही डेटा है रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स, उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ भी नहीं आता है. बिकॉज जो परचेज में सेल्स में से लेस होना था वो अगर परचेज में ऐड हो गया, ठीक है, दैट्स ओके. But there is a huge effect on the accounting aspects, accounting point of view. So we need to be very much carefully for that. जो भी उसने वाउचर एंटर किए हैं सारे के सारे परफेक्ट होने चाहिए, लेजर के हेड है that will be in a perfect way. And this is a special care point while you are doing the audit of a new entity. अगर आपके पास में कोई नया क्लाइंट आया, you are doing the audit of that particular entity, in that case you need to carefully examine these things. रिक्वायर रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट. जब हम लोग 3CD फाइल करते होते हैं ना, तब वो पूछता है कैश लेजर इज मेंटेन्ड, वी आर गोइंग टू टेक, परचेज लेजर इज मेंटेन्ड, वी आर गोइंग टू टेक, सेल्स लेजर इज मेंटेन्ड, वी आर गोइंग टू टेक, जर्नल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट, वी आर गोइंग टू टेक. But before ticking in that particular 3CD report, because you are going to sign that particular report, you need to just ensure that all these registers are maintained by that taxpayer or not. Okay, you need to check the same digitally, and if the physical register is maintained, in that case you need to check the physical register. So appointment related letters,
हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अपॉइंटमेंट लेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू टेक फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लाइंट. फॉर द टैक्स ऑडिट वी नीड टू हैव अवर अपॉइंटमेंट लेटर, चाहे वो क्लाइंट कितना ही स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, बट वी नीड टू टेक दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. एंड ऑल्सो वी नीड टू टेक द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. सो अराउंड 2 आवर एंड 25-30 मिनट्स हो गए हैं. So can we take a break for 5 minutes, just for 5 minutes? 7:20 हुए, 7:25 will start the session. So there is just a break of 5 minutes because we have a limited amount of time. So we are going to take a 5 minutes break only. We'll meet sharp at 7:25. Be stay online, stay tuned so that we can start our session on sharp 7:25.
Yes. So can we start? My voice is audible. Okay. So these are the important reconciliation. These are the important points from GST perspective we had already done. So GST related जो important point है, each and everything is okay for everyone. So that I just want to first start our discussion on Form 3CD, जो भी relevant clauses हैं related to our GST perspective. First, I want to discuss on that. Then after we are going to discuss on our other topic, that is RCM related entries and all that. Please note this. Just a second, I need to open the site of 3CD. I am just sharing my screen. So this is the form of 3CD, 3CB, 3CA, all these things are there. So we are going to discuss on certain relevant forms or certain relevant information from 3CD point of view, which is from GST perspective. Okay, all those important analysis we are going to discuss on that as well. We are going to discuss on clause number 44. I have the Excel sheet, relevant Excel sheet. We'll discuss on that as well. Okay, and we'll also check the viability of clause number 54. So first, this is the form of 3CD, 3CB, and in that, here is the line is mentioned, that is nil branches. Whenever you are going to do the tax audit, you just need to check from the GSTM portal, from the business registration certificate, that if there is any branches, then we need to report the number of branches here. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी ब्रांचेस हो और अगर अपन ने नील रिपोर्ट कर दिया, then this is in a situation, this is in a dangerous situation for us, so we need to identify the same, we need to check these things as well. Okay, now I need to open the chat box so that there are certain observations are there, pre-observations are there. I will share you the complete list of pre-observations as well, so that it will be very much useful for you. अभी आप लोग जो भी comments डाल रहे हो, जो भी observations डाल रहे हो, I will share you my drafted list. This is a drafted list which is applicable on each and every industry, and certain industry specific observations are also there. We'll also discuss on that, and certain GST related observations are also there for our safety. We'll also discuss on that. Now we need to report certain observations here. जैसे हम लोगों ने discuss किया था, if a particular client is not going to file the ITC 04, in that case we need to report the same, that the particular client is not going to file the ITC 04. If the particular client is not going to maintain the input stock register, in that case also we need to report the same, that the stock register is not maintained, not produced to us. If there is any difference between the GSTR 2B and 3B input tax credit, and we are not able to just the genuine of this particular client, in that case also we need to report the same, that there is difference between CGST and SGST and IGST, and also if there is any difference between the closing balance of input tax credit, in that case if there is proper reconciliation, in that case there is no requirement of any reporting. But if there is no proper reconciliation is provided by that particular client, in that case we need to report the same. And all other observations are also there. We'll discuss on that also in brief, but I'm just going to share the GST related reconciliations here. If the particular client has claimed the refund in the particular financial year, in that case put the note regarding refund as well, that the particular client has claimed the refund and we had checked the data on the basis of the documents provided to us.
सपोज उसने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्लेम किया है, इन दैट केस वी नीड टू डिमांड द कैलकुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिफंड एंड चेक द वायबिलिटी दैट द पर्टिकुलर क्लाइंट इज एलिजिबल फॉर, yes or not. Okay, now next point, we are going to discuss the GST related relevant provisions. Here you need to put the GST registration number, goods and services tax, और भी उसके जो भी registration है. Suppose the particular client is registered under Companies Act, then we need to report the Companies Act and we need to report the SIN, the corporate identification number we need to put here. Okay, now अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो पार्टनर्स के नेम है दैट शुड बी हियर, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू पुट द नेम एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ देयर इज एनी चेंजेस वी नीड टू रिपोर्ट द सेम इन 3CD, एंड आल्सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेम्युनरेशन एज पर द पार्टनरशिप डीड, देन आल्सो वी नीड टू रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन दिस स्टेप. ओके, सो हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है वी नीड टू पुट हियर. Now, what is the sector of that particular industry? मैंने initial stage of our discussion on the particular in session में मैंने बात की थी कि first we need to identify the nature of that particular industry, the business activities. So from that we need to select the particular thing and we need to put the same in this particular tab. Okay, now यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि the particular client is going to maintain the cash book, bank book, ledger, journal, sales register, purchase register, other supporting documents in computerized form. In that case, we need to download or we need to have all these particular ledger and required documents in our hand, and after checking the same we need to report the same. Okay, so all these things are mandatorily required for our new client, as well as if there is any old client we need to check this data, we need to check the viability, we need to check the genuineness of that particular client. Yeah, we need to mention the accounting method जो entity is going to follow. We need to mention the name that particular client is follow the mercantile system, cash based system, whatever will be the system, we need to report the same on the basis of the accounting. और ये हमको कैसे पता चलेगा? So for that purpose we need to check the accounting of that particular party. Okay, and for that purpose we need to check the financial statement, we need to check the ledgers, and after checking all those things we got the idea about the accounting system. And if there is any change in that particular accounting system, suppose last year वो mercantile system पे काम कर रहा था, this year the particular client is going to use the cash basis, in that case we need to report the same, that there is change in the accounting method. Whether any adjustment is required to be made to the profit and loss of company provision of income computation and ISDS income computation and disclosure जो standards है, we need to check that assessee has followed the provisions of those ISDS. Okay, हमेशा केवल हम लोग ये, मैंने ये नोट यहीं पर यहाँ पर इसलिए पुट किए हैं कि हमको ये पता चले कि केवल ये नोट लगाने से ये साबित नहीं हो जाता है कि एवरीथिंग इज ओके. वी नीड टू चेक दैट व्हाइल डूइंग द वैल्यूएशन द ICDS 2 हैज फुलफिल्ड बाय दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और नॉट. उसने जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लिया है वो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे लिया है या फिर नहीं लिया है. अगर वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं काम कर रहा है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू पुट एज नॉट एप्लीकेबल. रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए उसने एक्रूअल बेसिस काम में लिया है या फिर कैश बेसिस काम में लिया है, एज पर ICDS रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज द method. So we need to check that accrual basis is followed by that particular entity or not. For fixed assets we need to check that the accounting of that particular fixed assets are as per the income tax rules in the books of accounts and as per the ISDS followed or not. If there is any government grant, in that case we need to check that the accounting of that government class is done as per the ISDS or not. हमने डिस्कस किया था अगर कोई कैपिटल असेट्स में कोई सब्सिडी मिलती है, इन दैट केस हाउ वी आर गोइंग टू डू द अकाउंटिंग. सो इफ देयर इज एनी ग्रांट, इन दैट केस वी नीड टू चेक दैट द प्रॉपर अकाउंटिंग इज डन बाय दैट पर्टिकुलर क्लाइंट और नॉट. In case if there is any borrowing cost, that is any CC is taken by that particular party or any loan facility is taken, in that case we need to check the same. Suppose for completion of a particular project, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी इंडस्ट्री ने अगर यहाँ पर कोई बोरोइंग ले रखी है फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट,
I am not taking from journal CC point of view. I am talking from the point of view of specific project. If there is any specific project, in that case, this ISDS will be applicable. So you need to check that the proper implication of that borrowing is to be taken care by that particular entity or not, and the provision contingent liability and contingent assets is to be reported as per the accounting norms under the balance sheet or not. We need to check that उसका note balance sheet के नीचे उसने लगाया है या फिर नहीं लगाया है. We need to check these things. So जब भी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, we also need to check the disclosure of the ISDS regarding valuation of closing stock. इसीलिए मैंने आपको बोला था we need to demand the bifurcation of the closing stock. So for that purpose we need to check that the valuation of the closing stock is as per cost or NRV. अगर आपके पास में कोई ज्वेलर आता है, वो ज्वेलर बोलता है कि मेरी ऑडिट करना है, उसके पास में अब जो गोल्ड पड़ा है, you need to identify that what is the valuation method of that particular client. If there is any capital assets converted into stock in trade, in that case we need to report the same कि ये capital assets है, इसको stock में convert किया गया है, उसका ये वाला valuation है, ये उसकी amount है जिसको हमने convert किया, उससे related remarks है, वो सारी की सारी चीजें we need to put. Okay, जो GST related points होंगे will give deeply discussion on that, और जो other points है I will just take care in a brief way. Okay, is that okay for everyone? और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट लगे देन यू आर फ्री टू रेज द क्वेश्चंस नाउ. The performa credits, drawback, refund of duty of custom, excise, service tax, refund of sales tax, value added and goods and services tax, where such credit, drawback or refund are admitted as due by an authority concerned, in that case we need to report here. अगर जीएसटी में किसी क्लाइंट ने कोई रिफंड क्लेम किया है, इन दैट केस वी नीड टू पुट आवर रिमार्क, वी नीड टू पुट द अमाउंट हियर. If there is any duty drawback, कई बार जो एक्सपोर्ट के क्लाइंट होते हैं, if you are going to do the audit of an export related client, in that case you found that drawback amount for that particular client, in that case we need to check that the drawback amount is properly reported in the particular 3CD form. If you are doing the audit of a custom related client, in that case जो custom से जो drawback आता है, in that case we need to check that the performa credit, the custom related amount is here and all the things are there or not. There are certain escalation clauses are there in the particular agreement. Suppose अगर आपने कोई government का project लिया है, if someone is going to dealing with the government projects, in that case there is a clause of escalation clause. उसके कारण अगर कोई claim आता है due to price variation, due to inflation, due to time period, in that case that will be covered under that escalation clause, and उसकी वजह से अगर आपके पास में कोई claim आता है, in that case we need to report the amount, we need to remark related to that. If there is any other income, in that case we need to report the same due to that particular thing, which is amount not credited to profit and loss account, in that case we need to report. Okay, because जो भी refund आएगा, you are not going to report the same as an income. Okay, so for that purpose we need to make specific report in the 3CD form, and we had discussed related to performa credit, drawback, refund, escalation claims. If there is any land and building transfer, when you are going to check the fixed assets chart of that particular entity, और अगर वहां पर कोई building का transfer हुआ है, in that case first you need to identify that proper GST is paid by that particular party or not. Okay, and we need to identify that the same has been reported in that particular thing or not. That means the particular same is reported in the form 3CD or not, because the same is available here. आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर उसको डीएलसी की वैल्यू से ज्यादा पे सेल परचेज हुआ है, in that case we need to report the same in form number 3CD. Now, depreciation chart we had already discussed that in your form number 3CD you need to put the depreciation related figures. डेप्रिसिएशन जो आपने एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लेम किया है एंड एज पर इनकम टैक्स रूल्स, जो आपका इनकम टैक्स रूल वाला है, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन योर फॉर्म नंबर 3CD, एंड दीज आर द कॉलम्स ऑफ दैट डेप्रिसिएशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ईच कॉलम एट लास्ट. ओके,
any sum जो employee को pay किया है as a bonus and commission we need to report here. We had already discussed of that regarding point number 20A and 20B. जब हम लोग earlier discussion कर रहे थे, at that time we had already covered this. If there is any expenditure which is personal in nature, in that case we need to report the same in form 3CD. We had also discussed this point as well. And there are certain heads are also there, we need to report the same as per the heads. Okay, these are the point which is related to payment to non-resident and TDS not deducted. If there is any payment to non-resident and the particular taxpayer is not deducted that TDS, in that case we need to report the same in that. That means हमको पहले उसकी income में भी ऐड करना है, and then after we need to report the same in 3CD. And ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, in that case we are going to report as nil. But वैसे ही nil नहीं करना है, we need to check these things कि these are available or पीएफ रिलेटेड, फंड रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. ग्रेच्युटी रिलेटेड पॉइंट्स आर देयर. अब मैं अब इस पे डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दीज पॉइंट्स इन डिटेल. ओके, जब हम लोग पॉइंट्स वाइज उस टेबल को डिस्कस कर रहे थे, एट दैट टाइम वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाउंट ऑफ सेनवेट क्रेडिट. जो भी जीएसटी रिलेटेड पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. Point number 27, that is amount of Senvet value added tax credit availed or utilized during the previous year and is treatment in the profit and loss account and treatment of outstanding central value added tax credit in this account. यहाँ पर the word used in that particular 3CD is central value added tax. But now central value added tax is not applicable at all. Now GST is applicable and GST is a substitute of that central value added tax. So whatever will be the closing balance of that GST input tax credit, we need to report the same in clause number 27A. Maximum of the chartered accountants are not going to fill this particular clause, but we need to fill this the closing balance of the tax credit as per the books of accounts in this particular tab. ओके, और अगर आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन नहीं करवा रहे हो, इन दैट केस यू कैन स्किप दिस पॉइंट, बट दिस इज माय हम्बल सजेशन टू यू. यू नीड टू फीड द डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर कॉलम. ओके, हम हर जगह अपने आप से बच नहीं सकते. हम हर जगह ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिटेल हमारे पास में नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू फिल दिस डिटेल्स. वी नीड टू पुट द फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. Unsecured loans related transactions we had already covered. 269 SS we had already covered regarding the loan taken and all that points we had already covered. There is no requirement to discuss on that. Clause number 44 is there regarding the breakup of total expenditure of entity registered and not registered under GST. और ये वाली जो क्लॉज है वो 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल नहीं थी, बट नाउ दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल. और मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज गोइंग टू यूज द नोट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल और नॉट मेंटेन्ड बाय द पर्टिकुलर क्लाइंट. मैंने कई सारी 3CD रिपोर्ट्स देखी है, उसमें ये वाला क्लॉज डाल रहे हैं. सो एज अ ऑडिटर वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. ओके, हमको हर चीज के लिए ये नहीं लिखना है कि दिस इज नॉट मेंटेन्ड बिकॉज द एक्सपेंडिचर बाइफर्केशन इज ऑलरेडी मेंटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. आर यू एग्री विथ माय ओपिनियन दैट एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो भी उसके बाइफर्केशन है, द क्लाइंट इज मेंटेनिंग? जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स so that we can discuss the Excel sheet how we can manage these things. Yes, we'll discuss with example. We'll discuss the complete Excel sheet on clause number 44. So just government is demanding that उस क्लाइंट ने जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं और जो जीएसटी में रिपोर्ट किए हैं, एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स योर परचेस. ओके, सो क्लाइंट ने जो भी परचेस किए हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं और जीएसटी से कितने, बिकॉज गवर्नमेंट
also wants the genuineness of that particular client. Although we are going to prepare the reconciliation to check the viability, to check the genuineness of that particular client, but government also demand the breaker. Hence government come up with that particular clause, and इस clause के अंदर उन्होंने बोला कि जो भी आपकी परचेज है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, जो आपके एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यू नीड टू कंपेयर एंड रिकंसाइल द सेम विद द जीएसटीएन पोर्टल. ओके, जो हमने डिस्कशन किया था उसके अंदर हम लोगों ने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिकंसाइल कर लिया. नाउ इन फॉर्म 3CD दे आर डिमांडिंग द रिकंसिलिएशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. Okay, so I am just going to open that particular Excel sheet so that we can discuss on that particular Excel sheet, and also I will share you the technique how we can prepare that particular reconciliation from the books of accounts. But as a chartered accountant, as a professional, we cannot comment that this data is not maintained by that particular client, because all the taxpayer are maintaining those data. Accounting software is automatically maintaining this particular data, because they are selecting that we had bought that particular product from composition dealer, we had, this is an unregistered, this is an registered, that means all the things are there. How we can put this clause? इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नो क्लॉज वाली जो है रिपोर्ट भी शो कर दी. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन फॉर द एक्सेल शीट. एक्सेल शीट इज विजिबल. So this is the Excel sheet which we need to, this is the details we need to provide in that particular 3CD report for the expenditure bifurcation or purchase bifurcation. Okay, related to unregistered, related to composition and all that. So we are going to discuss on that as well. So इनका जो first column है, the first column, the first column, total amount of expenditure incurred during this year. So जो भी उसने एक्सपेंडिचर किए हैं, we need to report the same. अब ना आपके पास में ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट द एक्सपेंडिचर हेड वाइज, जैसे यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं. कलर केमिकल, फिनिश गुड्स परचेज, ग्रे क्लॉथ, पैकिंग मटेरियल, बैंक चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट एंड ऑल दैट. I suppose this is a very hard task to maintain these things. Okay, अपने लिए भी, because ये सारे सारे हेड निकालना, इनका वेरिफिकेशन करना, this is not possible. मतलब this is possible but थोड़ा सा complicated हो जाएगा. For that purpose you can do one thing. We can do one thing. We just need to bifurcate the capital expenditure and the revenue expenditure. And we need to provide the bifurcation of that as a composition dealer, as a regular dealer, as a unregistered dealer. This is possible. Okay, easily you can generate the reports from the accounting software. You just need to generate the item wise summary. You got that particular point. You will get these details from the accounting software. Each and every account software is competent to generate the head wise Excel sheet. Item summary. In that case, you got the complete taxable value. You just need to put the capital expenditure and the, or you can do one thing. You can bifurcate the purchase, the expenditure and the capital expenditure. 3 heads you can maintain. So सारे के सारे हेड अपने को नहीं लगाने हैं. Yes, we need to show all the expenditure, all the purchases, all the capital expenditure, each and everything is required to be reported in that particular sheet. Okay, except depreciation is not required to reported in this particular sheet, and bad debts is report इस sheet के अंदर report नहीं करना. These two things are there. There is no requirement to report the same. इसके अलावा सारे के सारे expenditure we need to report each and everything in that particular sheet. So, but there is no any bifurcation required of direct expense, indirect expense and all that. You can do capital and revenue expenditure. You can do purchase, capital expenditure and revenue expenditure. Okay, जो भी आपको पॉसिबल हो, आपके लिए जो सुटेबल हो, क्लाइंट के डेटा को देखते हुए, क्लाइंट के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी को देखते हुए, वी कैन मेंटेन. ना यहाँ पर आपको वो टोटल एक्सपेंडिचर शो करना है. सपोज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन माय परचेज इज 5 crore rupees and the capital expenditure is around 1 crore rupees. In that case, we need to put the total expenditure in this tab. Then, relating to the goods or services exempt from GST. Suppose मैं जिस बिजनेस में हूं, उस बिजनेस के नेचर में there is certain exempt services or exempt supplies also there. You need to report the same under exempt services.
You need to report the salary, labor charges, wages. I know all these things are not under the GST, but we need to report the same under the head of exempt supply. So you need to put all these expenses related to your exempt supply. Suppose ho sakta hai there is certain electricity related expenses, there is certain labor charges, wages, salary, there is certain remuneration related expenditure. In that case, we need or certain product which are exempted by notification. In that case, suppose freight is there. So in that case, we need to report the same in the tab of relating to goods or services exempt under GST. I know very well these are not GST, non-GST product. These are out of the. Yes, if you are paying wages and labor charges to a registered entity, in that case, we are going to put in this tab. If we are going to take the services from regarding our employees, that is salary, they are completely from the out of the GST. In that case, we need to put the same that these are from unregistered person, because there is no any bifurcation is available for the completely out of the GST related expenditure or 5 petroleum products. There is no any tab available for non-GST product. So we need to consolidate these things. This is that is what is we need to do. So for that purpose, अगर सामने वाला registered hai and we are doing as an exempt supply, in that case this is to be reported here. Relating to Mahir ji, is that okay? Relating to the entities falling under composition scheme. Suppose आपने कोई goods buy किया and that goods you are bought from a composition dealer. In that case, you need to report the same here, and the particular report is available in that particular accounting software. You can check from the accounting software. Buying from composition dealer or composition dealer purchase is available in that particular software. We just need to take that particular report, consolidate the amount, and we need to put the consolidated amount in this particular tab. All the expenditure, all the purchases you are made from. What will fall under expenditure related to entities not registered under GST? ऑल द एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी परचेज है जो अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से किए हैं, इन दैट केस यू नीड टू रिपोर्ट द सेम इन दिस पर्टिकुलर टैब. नाउ रिलेटिंग टू द अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, जो भी परचेज आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से की है, जो भी परचेज आपने एक्सपेंडिचर आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से किए हैं, अदर देन योर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अदर देन योर कंपोजिशन सप्लाई, इन दैट केस यू नीड टू रिपोर्ट द सेम, द कंसोलिडेटेड फिगर. Okay, now you just need to do one thing. You just need to download the headwise item summary from that particular accounting software. When you will download that particular headwise accounting summary, you just need to make certain filters from composition, और जिसके ऊपर जीएसटी की फिगर नहीं है उसका एक फिल्टर बना लो, और अदर सारे के सारे उसके रजिस्टर्ड टैब के अंदर चले जाएंगे, और you need to one filter, make one filter regarding the unregistered, so that हर चीज अपने को यहाँ पे शो हो जाएगी. This is in a dummy sheet, dummy data is there. This is not in a final sheet. We'll share you the final sheet as well, because we are also not doing the headwise classification. We are just doing the capital expenditure, revenue expenditure. Okay, we are also not going to maintain this particular headwise sheet. So relating to the other registered entity, we can do this. Okay, अगर आपको चाहिए तो SAP सॉफ्टवेयर के लिए जो अकाउंटिंग कीज होती है, आई विल शेयर. फॉर बिजी अकाउंटिंग कीज आई विल शेयर. फॉर टैली अकाउंटिंग कीज आई विल शेयर. फॉर मार्क आई विल शेयर यू द अकाउंटिंग कीज. ओके, सो ऑल दीज अकाउंटिंग कीज की मेरे पास में यहाँ पर कीज अवेलेबल है. किस तरह से आप हेडवाइज आइटम समरी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड थ्रू दैट हेडवाइज आइटम समरी यू जस्ट नीड टू पुट द फिल्टर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टर यू जस्ट नीड टू टेक द कंसोलिडेटेड अमाउंट रिलेटेड टू composition, related to exempted, related to unregistered entity, so that it will be more convenient and more easy for us.
Okay, and if you require, I will take that particular summary and I will prepare one recorded video as well for you. This is also possible at my end. Total payment made to registered entity. Now, जो भी पेमेंट उसने रजिस्टर्ड एंटिटी को किया है दैट विल बी हियर. नाउ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दैट इज अनरजिस्टर्ड पर्संस के बिहाफ पे जो भी एक्सपेंडिचर किया है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी सर्विसेज अवेल किए या फिर जो भी गुड्स बाय किए हैं, वी नीड टू रिपोर्ट द सेम हियर. दैट मींस अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, composition dealer and exempt supply. These four bifurcations are there, and in these four bifurcation we need to reconcile this figure, because ये reconciliation भी तो जरूरी है जब हम लोग कर रहे हैं. For that purpose, all the expenditure which are which we had taken from the unregistered person, we need to put in this particular tab. Composition के लिए report is available, we need to put the composition related here. रजिस्टर्ड बैलेंस अपने पास में आ ही जाएगा, एंड एनी एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू चेक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू गॉट द आइडिया अबाउट द आइटम्स इन द P&L and balance sheet, so that you got that idea that these items are exempted. Accordingly we need to prepare the sheet. Okay, so for that purpose the basic thing is that पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर आइटम को आप चेक नहीं कर पाओगे. यू नीड टेक द आइटम वाइज, हेड वाइज समरी. Okay, and this report is already generated because जब कोई लेजर क्रिएट होता है एट दैट टाइम दे आर गोइंग टू सेलेक्ट अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, कंपोजिशन, एग्जेम्प्ट, ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू सेलेक्ट. हाँ, अब उसके अकाउंटिंग करने के जब वाउचर क्रिएशन के टाइम पे अगर कोई गलती हो गई होगी, इन दैट केस वी नीड टू टेक दैट पर्टिकुलर डेटा ओनली. सो वी नीड टू पुट वन रिमार्क इन अवर ऑब्जर्वेशन कि वी हैड प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द डेटा फ्रॉम द रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अब उसमें इनपुट कैसे गए हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस और फॉर एनीवन टू वेरीफाई ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वाउचर. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू पुट वन रिमार्क फॉर दैट. सो क्लॉज नंबर 44 इज ओके. For composition dealer, when we are going to create the ledgers, when the account is going to create the ledger, in that case they are going to select as a composition dealer. वहां पर ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, composition dealer. जैसे ही composition dealer select करता है उसका एक अलग वाउचर क्रिएट, लेजर क्रिएट हो जाता है, and on the basis of that ledger we can generate the list. So is that okay, सुरेश जी? बट यस, अगर अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ होगी, इन दैट केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग. Yes, will provide you the 2A 2B Excel sheet report, will provide you the 2S 26AS reconciliation, 2A 3B reconciliation sheet will provide you by today itself. Although will share you the complete Excel tool for GST. Okay, so that you can use the same at the time of your GSTR 9 and 9C as well. There is no issue with that. So each and everyone is okay with that. Mahip ji, is that okay? जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जस्ट फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में, so that we can start our discussion on our next topic. So now there are certain more important points are there while doing the tax audit. From GST perspective, we just need to prepare the reconciliation. We have discussed the 4 reconciliation we need to check. From profit and loss account, we need to check certain terms like discount, like interest, like commission, like rent. Okay, we need to check the input tax product closing balances. We need to put the GST related remarks in our form number 3CD. Okay, we need to put the input tax closing balance in 26A, clause number 26A. Also, if there is any refund in that case, we need to put the same in 3CD related to drawback, related any refund, and all that we need to check this here.
Okay, so all these things were, all these important points are there. We need to put the details in the clause number 44. हाँ, अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जहां पर प्रॉब्लम्स ज्यादा है, जहां पर उसकी अकाउंटिंग ही प्रॉपर नहीं है, in that case we can put the note that clause number 44 is not possible from the accounting data maintained by that particular client, and we need to put the same in the observation remark as well, so that we can save ourselves. Okay, also if you find that from the accounting data which is maintained by that particular party, this is possible, in that case we need to provide that particular details. So now all these things हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जस्ट कुछ पॉइंट है जो हम लोग रिकैप कर रहे हैं, ताकि वापस जो भी हमने आज डिस्कस किया है दैट विल गिव एन ए फिनिशिंग. So, presumptive taxation scheme, whether assessee is opted for any presumptive taxation scheme as per the section 44 ADA, first schedule or any other relevant section. If yes, check the amount and the application of the relevant section. Check whether such profit and gain have been included in the profit and loss account. Suppose उस entity का कोई स्कीम में उसने जो है presumptive taxation स्कीम में टैक्स का पेमेंट किया है, in that case we need to check that the same is to be included. Also the ICDS, we need to check the applicability of income computation and disclosure standards. Also we need to identify the end days. I am just talking from the tax audit perspective. We need to check that the details are given, the IC, the accounting is as per the income computation and disclosure recommendation or standards. We need to check the valuation of inventory is in a proper way, that is cost or NRV, whichever is lower. In case when we are going to do the audit of a specific segment or specific sector, just like we are going to do for audit of a construction industry or in a jewelry industry or in a textile industry or certain manufacturing industry, steel industry, in that case we need to check that the work in progress is as per the law, और जो उसने क्लोजिंग स्टॉक शो किया उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है. कहीं ऐसा तो नहीं है क्लोजिंग स्टॉक को अकॉर्डिंगली फीड आउट कर रहा है, बिकॉज कई बार क्या होता है क्लाइंट जो है डेटा बेचता है और वो बोलता है प्रॉफिट सेट करना है, उसके लिए वी आर गोइंग टू एडजस्ट द क्लोजिंग स्टॉक. We are just going to adjust the closing stock. For that purpose, I am saying that we need to carefully examine the valuation methodology. अगर हम लोग उसके प्रॉफिट को सेट कर रहे हैं as a chartered accountant, as a professional, this is also our responsibility to plan the business of that particular client. सो जब हम लोग भी उसका क्लोजिंग स्टॉक सेट कर रहे हैं या फिर हम उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू केयरफुली एग्जामिन कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है. Fixed assets and depreciation, we need to carefully examine the fixed assets chart and the calculation of depreciation. That fixed assets, all the fixed assets are here. और अगर उसने कोई fixed assets वहां पर buy किए, if there is any buying of a particular fixed assets, in that case we need to demand the इनवॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स, कि उसी वैल्यू पे उसने उसको रिकॉर्ड किया. कि ऐसा तो नहीं है कि उसने फिक्स्ड एसेट्स 50,000 की बाय की और वो उसको 75, 80, 90,000 पे वहां पर रिपोर्ट कर रहा है. Also, we need to check expenditure fixed assets में कोई addition हुआ है. In that case, we need to identify the nature of that addition in that particular fixed assets. That the addition is in nature of the capital or in case of revenue. Because if the expenditure is in nature of revenue, in that case the expenditure is directly transferred to profit and loss account. And if the expenditure is in nature of the capital, in that case that will be added to the fixed assets. Amount debited to profit and loss account being in nature of capital, personal and expenditure, advertisement expenditure, in that case we need to report the same and add it to profit and loss account. This point we had already covered. Sir, in points के through मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, this is the advisory. जो भी आज हम लोगों ने नोट्स ई नोट्स यहाँ पे काम लिए हैं, दिस इज द कंप्लीट एडवाइजरी ऑफ ICAI. ये ICAI की एडवाइजरी से ही लिए गए हैं, सो दैट यू हैव द फेथ कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द ICAI मॉड्यूल, ICAI टैक्स ऑडिट गाइडलाइंस. Disallowance deemed income under section 48(3), if there is any cash payment more than 10,000 rupees, in that case we need to add the same in the income and we need to pay the tax on that. Okay, so we need to check कहीं कैश की एंट्रियां तो नहीं है. If we are doing the adjustment, अगर हम लोग उसका बाइफर्केशन भी कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में भी तुड़वा रहे हैं, in that case we need to check the viability, feasibility, that हर ट्रांजेक्शन में तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि 10,000 से अबव कैश का पेमेंट है.
Recovery of bad debt allowed earlier as a deduction. In that case we need to check कि पहले उसने reduction claim कर लिया था, now अगर कोई recovery आई है, in that case that is to be added in the income, we need to check the same. Okay. Income chargeable under the head income from other sources. In that case we need to check the sources of other income, क्या क्या उसके sources हैं, कहां से उसको other income आ रही है. We are going to add the same in the profit and loss account, or we are going to adjust the same while filing the return. We need to check these things. Okay. So amount accepted, amount payment, we need to check. TDS TCS verification, for that purpose we need to check the form 26A. Yes, we'll share you the complete PDF file on your mail as well, and we'll share you on WhatsApp number if possible. But on mail, you will definitely get this PDF file by tomorrow morning. Okay. So we need to do the TDS and TCS verification. Already we have discussed about the techniques to verify the TDS and TCS. So all these things deemed dividend are there. Observations to be disclosed. अब now question arises कि कुछ ऐसे observations हैं जो हमको हमारी 3CD फॉर्म के अंदर रिपोर्ट करने हैं. From GST point of view, we had already discussed that we need to report the stock statement maintenance related clause in the form 3CD, related to closing input tax credit balance related mismatch if there, and if client has not provided the proper reconciliation to us, in that case we need to report the same. If there is any mismatch in the GST returns, in that case we need to report the same. And also you need to report the valuation methodology of the closing stock in the observation, because जब स्क्रूटनी आती है और डिपार्टमेंट और आईसीएआई सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, एज अ ऑडिटर सब लोग ये चाहते हैं कि वी नीड टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ परफेक्ट वे, और कुछ भी गलती की है तो वो गलती क्लाइंट की नहीं, वो गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी. सो दिस इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर सेल्फ, क्योंकि हम क्लाइंट के लिए दौड़ते हैं और एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट और प्रॉब्लम क्लाइंट दौड़ जाता है. सो फॉर दैट पर्पस जो भी हमारे नोट्स है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है, जो भी हमारे पॉइंट्स है, वी जस्ट नीड टू पुट इन द फॉर्म नंबर 3CD अंडर ऑब्जर्वेशन टैब. क्लाइंट वहां मना करेंगे सर प्लीज डोंट पुट दिस, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव बना करके वहां रिपोर्ट करेंगे, बट वी नीड टू रिपोर्ट फॉर अवर सेफ्टी. Regarding various physical register and ledger, we need to put the same. Now, it is not possible to verify whether the payment in excess of 20,000 have been made otherwise than by way of check उसको 10,000 कर लेना. And this note we need to put because हम लोग ही इसको bifurcate करवा रहे हैं. कई सारी सिचुएशन में आज हम लोग सब एज अ फैमिली ही बैठे हैं, तो हम लोग ही कहीं पर गाइड करते हैं क्लाइंट को कि कैश का एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ज्यादा है तो उसको तो टुकड़ों में तोड़ दे. सो इन दैट केस वी नीड टू रिपोर्ट दैट हमने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो जो उसने डिटेल दी उसके बेसिस के ऊपर हम ये कह रहे हैं. It is not possible to verify whether the taking and accepting of loan, deposit and repayment of same have been made otherwise than account में check, because जब हम लोग 269 SS 269T की फीडिंग करते हैं, at that time they are also demanding or they are also requesting for the payment methodology. At that time we are putting the same as per the client condition. जो अपने वो client डिटेल देता है कि ये वाला client ये वाला पेमेंट ई पेमेंट है या फिर चेक के बेसिस है या फिर किसी अदर कैश में है या फिर जो whatever will be the point, we are going to report only on the basis of the client condition. So we need to report the same in our observation tab कि जो डिटेल उसने हमको दी है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया है. We have verified the compliances of provisions of chapter regarding deduction of tax at source regarding the payment thereof to the credit of the government. Auditing standards generally accepted in India, which include test check and concept of materiality. Such audit procedure did not reveal any significant non-compliance with provision regarding TDS deduction. तो ये भी क्लॉज अपने को वहां पर पुट कर देनी है कि हमने यहाँ पर TDS से रिलेटेड जो भी एप्लीकेबिलिटी है, we have checked the same. नाउ जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करते हैं वहां पर हर चीज का क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है. फॉर दैट पर्पस वी नीड टू पुट दिस रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आइटम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सपोज अगर 2 और 3 आइटम्स ही है, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू पुट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ comment. But if there is number of items are involved in that particular industry, in that case we are going to report this clause as well.
It is not possible to determine the ratio of each principal item of goods as necessary by bifurcation of respect of all required attributes are not in possession of that particular assessee. In case of manufacturing industry, if they are going to manufacture final product from various multiple products, in that case we need to report this clause as well. Okay, and there are certain notes to accounts are also available, notes to the reports are also available. I will share with you the same. These are the normal points, very general points taken from the ICAI module. So there is no requirement to give time to that particular point. So in our today's session, conclusively, we had started our discussion from the basics of the tax audit, that how we are going to start the tax audit, what are the necessary documents, those we need to take for doing that particular tax audit, what are the special point, what are the important point we need to be very much careful, how we are going to get the external confirmation from GSTN portal, how we are going to reconcile the 26 As, how we are going to fill the clause number 44, how we are going to put various observations, how we can prepare various reconciliation for checking the GST related points, that is sales, purchase and turnover related bifurcation, closing balance, and also what are the points we need to be very much careful while doing the audit from that particular reconciliation point of view, from interest, discount and all those things. Now, when you are going to check the profit and loss account, you just need to check if you found any these type of services, in that case reverse charge mechanism is applicable. So you need to identify and you need to confirm that client has paid the tax under reverse charge mechanism on all those particular type of supply of services. First one, GTA related services. If you found any freight related expenditure, transportation related expenditure, in that case reverse charge mechanism is applicable. Legal services taken from the advocate. I'm not saying the word legal services taken from the chartered accountant. If the particular taxpayer is going to take the legal services from the advocate, that is advocacy services, that is also covered under the reverse charge mechanism. Services provided by an arbitral tribunal. If there is any dispute in the business and if the businessman is going to take the services of arbitral tribunal, in that case also the provision related to reverse charge mechanism is applicable. Sponsorship services, reverse charge mechanism is applicable. Services supplied by central government, state government, local authority, if there is any services provided by CGST and local authority to that particular business entrepreneur, in that case that will also covered under the reverse charge mechanism. Land taken on lease by the promoter, or in that case if the lease payment is done by that particular promoter, in that case with that lease payment we need to identify that reverse charge mechanism के अंदर टैक्स वहां पर पे हुआ है या फिर नहीं हुआ है. How to identify the GTA services paid through cash? For that purpose, you need to check the cash ledger. You need to check that particular expenditure ledger, because payment is also there in that particular case. So that debit side you got the expenditure, credit side there is a payment. So you need to check from the ledger itself, and we need to believe on that particular ledger. If any services, in case of company, if any services received from the director, stamp duty payment के case में there is no RCM is applicable, because RCM is applicable. We are going to discuss on the list of the services on which reverse charge mechanism is applicable. So in case of stamp duty charges, there is no reverse charge mechanism is applicable, because this is the legal services. Any services received from an insurance agent, in case of insurance company, in that case also reverse charge mechanism is applicable. When you are going to do the audit of an insurance company, in that case this point is important. Copyright music composer services taken by the company, in that case also the reverse charge mechanism is applicable. In case of bank, all these points are related to bank. In case of DSA services, business facilitator and business correspondent, in that case also reverse charge mechanism is applicable. If a bank is going to take the services of DSA, business facilitator and business correspondent, and bank is going to pay the amount to these persons, in that case all those expenditure RCM will be applicable.
services received from the security personnel, if company is going to take any security services, or when you are going to checking the profit and loss account of that particular entity or expenditure side, if you found the entry as a security expense, in that case you need to ask for the reverse charge mechanism. If the entity is received any services for the renting of the vehicle, और उस व्हीकल की रेंटिंग में फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड है, सपोज उस कंपनी को कोई ट्रैवलिंग करनी थी, फॉर दैट पर्पस उसने बोला कि मुझे ये व्हीकल चाहिए ऑन हायर एंड फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू पे 10,000 रुपीज, there is no bifurcation for the fuel cost and all that. In that case, on that particular amount, reverse charge mechanism is applicable. So from my opinion, अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेंडिचर दिखता है, यू जस्ट नीड टू वंस आस्क फ्रॉम योर क्लाइंट, बिकॉज फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिस इज नॉट पॉसिबल कि उसने यूनिट पे पैसा दिया है या फिर उसने फ्यूल पे पैसा दिया है, या फिर यू आर नॉट गोइंग टू चेक द फ्यूल एक्सपेंसेस with that. So these points are just for basic. We need to have the idea about all those points कि हम ये points check करने जा रहे हैं वहां पर. So all these types of lending certificates, जो priority sector lending certificates है RBI issue करती है, on that also reverse charge mechanism is applicable. So these are the services. If you found these type of services in the profit and loss account, in that case, this is a signal that RCM is applicable on those services, and you need to ask the question from your client, you had paid the RCM or not. Motor vehicle guy charge GST. That means if the particular person is registered under GST, in that case they will charge the GST. Stamp duty पे there is no GST. So conclusively, we can say in our today's session, we had discussed the complete tax audit from GST perspective. Also, we had covered the certain important points which we need to be very much careful while doing the tax audit. Certain important checklists, certain important analytical point हम लोगों ने उस टेबल में डिस्कस किए. This table is really very much relevant. This is also taken from the ICAI guidance note. And we had created this simplified table in a simplified way. Okay, so you can check, you can prepare the checklist as well कि हमको टैक्स ऑडिट में कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं, so that बस इतना ही प्रयास है, इतना ही एफर्ट है कि जो टैक्स ऑडिट हम लोग कर रहे थे, हम उस टैक्स ऑडिट में एफिशिएंसी लेके आ पाए. दैट टैक्स ऑडिट शुड बी इन अ एफिशिएंट वे, because we are doing this task as a professional. So this is our responsibility to do that particular exercise completely in an efficient and effective way. And for all those who are going to watch this video on a recorded version, this is an information for them. You may connect with me or any question for any query on WhatsApp. You may chat with me or WhatsApp will available for you. If you want to talk, then also there is no issue. You just need to put one message to me. We'll give you suitable time and we'll connect. Okay. And all those who are live, very thanks to all of you. If you have any question, if you have any doubt, if you have any query related to tax audit during the complete September month, you are free to ask that question, to ask that point. Or while doing the GST reconciliation from GST point of view, अगर आपको कोई भी doubt आए, then also you are free. You just need to put one WhatsApp message on my WhatsApp number. So I will provide you the reply in a suitable time. Okay. So now this is the time for dinner. आप लोगों ने बहुत पेशेंसली सुना और बहुत मतलब एक क्वालिटी टाइम मैंने आप लोगों के साथ में स्पेंड किया. Whatever will be your suggestion, whatever will be your feedback for this particular session, you may share your feedback and suggestions on my WhatsApp number. That will be the biggest reward for me. Thank you for attending this webinar. मिलते हैं next webinar में. और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो, you are free to raise the questions on my WhatsApp number. We'll also discuss. कॉल पे भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको इस पीडीएफ फाइल को पढ़ने के बाद कोई भी इशू आए. This PDF file and the Excel tool will share you by tomorrow morning. You will get this on your registered mail ID. Thank you, everyone. We'll discuss.